aspirations and the aspirations of its people. And it is here that we shine the spotlight on India, the emerging third superpower. Ladies and gentlemen, with that, we would now like to invite the MD and CEO of Times Network, M.K. Anand, to address this August gathering. Honorable Minister of Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari, assembled dignitaries and conclave delegates. A very good morning and a warm welcome to India Economic Conclave 2023. We are proud to present the 9th edition of this landmark event, and it has been our attempt to curate content for IEC around themes that emerge and merge into significant national agenda over time. We capture emerging facets of the India story in a way that ignites the imagination of our nation and its leadership. You would remember that it's on this podium that we first talked about the 5 trillion aspiration for the Indian economy. And since we live in the most happening period of our nation's history, it's actually been a bewildering array of choices of themes year after year. It's in fact been our pleasure cheerleading the progress even as we see India's graph rising. India has always been poised for greatness due to the sheer size of our economy and the law of averages, which had to catch up eventually. What was needed actually was perseverant effort and a peaceful society determined to keep improving its existential condition. And that is something that our government has been able to provide over time. And certainly in the last 8 to 10 years, it has been a very, very strong and good period for us. And India was always supposed to sort of reach. And that time, I think, we have, for what we've been talking about, this whole thing that we see say in Bollywood, apna time aayega. And that dawn, however, was always some time away. However, what we have seen in these last couple of years, after the pandemic, is a sudden turn of events and a rapid re-rating of regions and nations globally. COVID disrupted the world order. And events after that, in rapid succession, US leaving Afghanistan in 21 August, Russia attacking Ukraine in February 22, the continuation of lockdowns in China, and the trade standoff which started around 2019 or so between China and the US were all landmark events. Amidst all this, when most national and regional economies were being bruised and battered by inflation, pandemic, energy shortage, war, and even the unheard of headlines of nuclear threats in Europe, India was quietly jogging at its usual pace, recording 7% growth. Add to that, in April this year, India has overtaken China as the world's largest nation by population. We are today the largest number of human beings, human brains and hands on earth. And we will be this way for the foreseeable future, 100 years down the line, maybe even 500 years down the line. India is now no longer just a potential or a dark horse. In a span of the last 2 years, the discourse has changed. We are now clearly seen as the hot favorite to eventually be the world's #1 economy by the turn of the century, by 2070 or so. And the war in Ukraine and China's belligerent stance on our northern borders has only tilted global power equations in our favor. We were always a military power to reckon with. The events of the last few years have only worked in our favor and motivated us to build our muscle in that side also. The Indian innings is beginning here. #1 population, rapidly rising, #5 economy, #4 military. In a multipolar world, the critical Indian Ocean region needs and deserves a mature stabilizing factor. The world needs an alternate production hub. India is already all that and more. We believe it's time for us to recognize that what the world is already realizing. We are living through the emergence of our dear nation as the #3 superpower on earth. This edition of IEC is our attempt to drive home this specific point to every Indian. And we have planned a record 53 sessions over these 2 days for this. I'm sure you will go back from here as different people. I welcome you to immerse yourself over the next 2 days in the many discussions, debates, and deliberations over the theme, India, the emerging third superpower. Thank you.
Thank you very much, MK, for setting the context for our conclave. We now request you to please come back on stage. We'll now have the lamp lighting and the formal inauguration of the India Economic Conclave. As we inaugurate the conclave today with the lighting of the ceremonial lamp, we hope that the light of our intellect takes us all beyond the darkness and towards a higher purpose. Can I please request Mr. M.K. Anand to come on stage, and to join him, we would like to invite on stage to do the honors the Managing Director of Times Group, Mr. Vineet Jain. It is our privilege to have with us this morning the Honorable Minister for Road Transport and Highways in the Government of India, Mr. Nitin Gadkari. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, please. Thank you, gentlemen and Honorable Minister, for inaugurating the event. Ladies and gentlemen, may I please request you all to stand up for the national anthem. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you very much, Gadkari ji and Mr. Jain. We request you all to please stay back on stage with us. Thank you very much, MK, for joining us in the inauguration. And we would now like to invite the Managing Director of Times Group, Mr. Vineet Jain, for his inaugural keynote address. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the 9th edition of the Times Network India Economic Conclave. It is not often that a nation's growth is acclaimed across the world. Fortunately for us in this room, we bear witness to an Amrit Kal that promises to reap India's great demographic dividend and bring widespread prosperity to Indians. It is not a bullish expectation anymore. Just yesterday, the GDP has beaten all expectations and forecasts to clock 7.2%, higher than any economy in the world. The India growth story is here, now, and real, as we surge ahead under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi's strong and bold government.
It has unlocked opportunities like never before for Indian entrepreneurs, many of whom are young and raring to go. In keeping with this tradition of inspiring national discourse and debate with highly relevant and thought-provoking themes, this year, the focus of this economic conclave is India, the emerging third superpower. As the fastest growing large economy that is thriving amid global headwinds, backed by its growing geopolitical heft and G20 presidency, IAC 2023 explores what lies ahead for India. It also charts the course of action for businesses so they can fully leverage the benefits of rapid economic expansion. As with every year, in this 9th edition, the conclave aims to champion the economic agenda of the nation. We have confluence of thinkers, policymakers, economists, business leaders, and global influencers under one roof to discuss the roadmap to convert India's aspirations into actions. After all, what's vision without a clearly spelled out mission? From infrastructure and innovation to education and environment, deep insights are certain to emerge from this year's conclave. I have no doubt that they will help turbocharge your businesses and brands. Thanks to Prime Minister Modi's leadership, which has ensured stability at home and respect the world over, we have everything to gain. I take this opportunity to express my deepest gratitude to the battery of senior ministers who have graciously accepted our invitation to share their valuable time and path-breaking ideas with this high-powered gathering. A very warm welcome to the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari. And a big thank you to Shri Vaidyanathan, MD and CEO, IDFC First Bank. India is poised to take its place at the very high table of global superpowers. The next 2 days will help you get a first-hand view of the roadmap to that pinnacle of achievement. I wish each and every one of you the very best for the future. Thank you. Thank you very much, Mr. Jain, for the keynote address. Can I please request now Mr. Vaidyanathan for the theme address? In fact, this is going to be our focus for the next 2 days here at the Times Network India Economic Conclave. India has effectively shown its ambition to play a greater role in world affairs and is rewriting history with her economic and financial prowess in world history, Padmaja. And to talk to us about this theme, I would like to invite our next speaker. He's been board member of ICICI Bank. He has also a really unique success of setting up an NBFC Capital First in 2012 and converting it to a bank by 2018 by merger with an existing bank. Today, IDFC First Bank is a highly successful bank with assets of over 2 lakh crores with annual profit of over 2,400 crores. Ladies and gentlemen, he understands the Indian economy from its grassroots across the rich and the poor and is best placed to talk about India's march to 2030. Please welcome the MD and CEO of IDFC First Bank, Mr. V. Vaidyanathan, to address the audience in this edition's theme. Thank you for that. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Mr. Minister, Vineet and MK and everybody who spoke. The speakers before me spoke some wonderful things about India and the opportunity ahead. So I will try not to repeat some of them, but just to make a few points, what makes us really very positive about our country going forward. Just to put this in context, the theme is the third emerging superpower. Now,
I've tried to focus on 2030, which is just 7 years from today, so that it's just within grasp, and try to see what the economy could look like and what is going to power us ahead. Now, by 2030, India will be like a $7 trillion economy. It's like about $3.4 trillion economy today. And there are various estimates for India's GDP by 2047, which is somewhere between $30 to $40 trillion, depending on various estimates. Let us say, hope the truth is probably somewhere in between. Now, GDP is not just a number. It has a serious implication on the standards of living of people, health, education, roads, infrastructure, all that. Now, for context, since I'm one of the initial speakers, inaugural speakers, I'll try to frame for you where India is coming from. In 2000, India's per capita GDP was $442. India reached $1,000 per capita in 2008. India reached 2,000 per capita in 2020. And if you divide the $7 trillion by the population of India, like 150 crore people, India's per capita income in 2030 will be like about $4,700. Let us say within touching distance of $5,000. Now, for 45 years, after independence, nothing happened. India GDP stays flat and nothing moved. And it's a very big price to pay. And you can't say this because of India's a democracy, India's a poor country, India just, it's not true. That's not the only reason. All the Southeast Asian tigers, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, all these countries are equally poor like India in 1960. Per capita income of India and most of these countries were all about maybe $100 or $130. By 1990, which is 30 years from 1960, all these countries had reached per capita income of $6,500 to $7,000, which India has not even reached today. 1990, $6,500. India was at $440. So you really know that India has truly underperformed. And thankfully, somewhere in 1990s, India started doing the reform. And then you see every 10 years per capita is now doubling. And now the numbers are read out to you. Now, what is the implication of this? This is very important. Now, we say that GDP affects the lifestyle of people. Let me tell you the implication of this. The tax collection of the country today, tax collection, both center and state put together for our country is about 47 lakh crores. Now, this is all GST netted off what paid to the state, etc. Absolute collection, state and center. India's GDP is 272 lakh crores, 47 lakh crores are tax collection. That translates to 17% of GDP. 17%. Now, if India stays at same 17%, now we wake up in 2030 with 650 lakh crores, from 270 lakh crores going to 650 lakh crores. And then you take 17% of 650 lakh crores. India's tax collection in that year, whoever will be the finance minister, will be presenting a tax collection of 115 to 120 lakh crores of tax collection. Just to recollect, 47 lakh crores today, 120 lakh crores of tax collection in 2030. Now, the country is collecting that amount of tax. By that time, number of poor will be anyway lesser. Tax collection will be that amount. And then ministers like our Honorable Mr. Gadkari sitting here will be now investing not 10 lakh crores a year in capital expenditure, probably be investing 30 lakh crores capital. There's like crazy, like it's an insane growth coming up. And that's the extraordinary power of compounding that is coming. I'm really excited to hear the budget speech of, say, 2030 as to what that story looks like and where the money and investment is going. I mean, it's just getting thrilling for us. Now, I'm coming from the banking system, so I'll tell you the impact of the banking system point of view. Today's the credit outstanding in the country, total credit, banks, NBFCs all put together, a net of bank lending to NBFC, is about 150 lakh crores. 150 lakh crores credit outstanding. You compound this about 14% also till 2030, it is going to be close to about 400 lakh crores. Think, so 150 lakh crores going to 400 lakh crores, which means extra 250 lakh crores will be credit outstanding. That money, obviously, if a bank is lending, obviously someone is getting that money. That amount of money is going either to a corporate, which will invest, probably going to an individual who's going to buy a car or a two-wheeler or something, or going to an SME is going to invest in the... So that amount of money is going to hit the Indian system,
and they are obviously going to buy something with that. And you're buying that, then obviously, if you're buying a car, some steel, some rubber, something is getting produced. So, so that whole chain of economic economy is going to dramatically change the story going forward. Now, let me just say that what are the few things that are India is getting right at this point of time as what we did not get right earlier. Number one, I told you, banking system, credit from 150 lakh crores to 400 lakh crores. That's a big growth that's going to happen in the next 7 years. Number two is economic ideology. If you recollect the movies of 1970s, you will find that the villains used to be business people. Okay, Pran, Prem Chopra, Amrish Puri. Just think of all those, all of us of that generation very well recollect those names. They were all bad people. All bad people, and the only heroes were the worker union people fighting them. Yes or no? Yeah. And when we see today, you don't find any movie being made like that. Basically now entrepreneurship is now becoming an accepted, it's that the government is talking, we want to grow entrepreneurship, we want to grow the business, and so on. Number two, is in terms of the entrepreneurial government that we have. This is also very important. Entrepreneurial government. I'm not saying entrepreneurial government. I'm not saying the government is setting up PSUs and running, steel companies and airline companies. India even nationalized banks. India even nationalized insurance companies. India nationalized everything that could see at that point of time. I'm not saying entrepreneur. I'm saying entrepreneurial government. It's very important. For example, when GST was supposed to be launched, a lot of people said a lot of things. Oh my God, we are not ready. System is not ready. People are not ready. States are not ready. God knows. But at least our government went like a bullet at it and said, we just have to get it done. Announced a date, made it happen. And then things fell into place at that point of time. This is an example of a government that gets it done. When I mean entrepreneurial government, I mean a government that can get things done. That's what I really mean. And now Aadhaar. Again, people are talking of Aadhaar, saying that, is this, etc. Somehow government called it a money bill, put it in the parliament, got it done. Supreme Court later approved it, and life went on. But if you get stuck in red tape and this debate and that debate, nothing would happen in the country. No Aadhaar. And by the way, all of us now know the power of Aadhaar, because now Aadhaar is not just for opening bank accounts. You're giving a large number of other services, giving subsidies to the poor. Look at the amount of benefit that came from Aadhaar, because a entrepreneurial government got it done. So the first thing I told you is that the ideology that business is good, entrepreneurs are good, has to grow. Number two, I told you entrepreneurial government that makes things or gets things done. Number three, reason why we feel good for India, and I hope India can continue to do that. Suppose you're a finance minister and you suddenly have tax collection of, let me say in this example, 47 lakh crores, both center state put together. You can of course give this money to people, to the poor, and say, I made so many people give farm waiver. You can do hundreds of things and make millions of people happy. But then you will build inflation, where the game goes. We've seen that movie many times before. But at least in our case, we're saying, okay, we're going to use this money to build roads, bridges. Gadkari is sitting here with us. It is an astonishing story. I don't know how many people know. From the time of independence till 2014, India had built about 97,000 kilometers of highways. Gadkari can confirm when he speaks here. In the last 9 years itself, India has built 50,000 kilometers of highways. It's staggering to think about it. It's staggering to think about it, because building a road is not like writing a bill and cutting tax or anything. It's not just a paper. You got to really get the contractors. Somebody's got to build the material. Somebody build the road. You got to acquire the land. You got to deal with litigation. That's a real hard plumbing work, and India's done that. And when people say democracy mein ho nahi sakta, right in the same democracy in this country, Gadkari has made it happen. So really, Mr. Gadkari, we want to. And now, when we talk of infrastructure, I'm astonished when we hear him speak sometimes. Now he talks about waterways. Now it's not only green economy, now talks the blue economy also. Now multimodal transport, national logistic policy.
I mean, a government that gets things done. You know, those days, once upon a time, people used to say, let the government get out of the way and we will do. No, government can't get out of the way. Government has to make things happen, not by running companies, but by enabling entrepreneurship and enabling things like this to happen. By the way, when these kind of roads come up 50,000 kilometers, transport becomes easier, GST makes sure that your logistic costs become lesser, there are no octroi posts, cost of goods comes down, India becomes competitive, exports go up, manufacturing goes up, you know, all that story. So I told you three factors, you know, entrepreneurial government, investment in highway, infrastructure. Fourth factor is digital. You know, I was in US last week, and I was just watching some people pay. Either pay, pull out credit card, debit card and pay, or people pay cash, you know, at the normal retailer, etc., etc. Now, I mean, I was looking at them and you call me third world country, boss, you're third world country, I'm first world country. And this is a matter of huge pride that our country is, at least on digital transaction, through NEFT, RTGS, Bharat Bill Pay Services, credit card, debit card, UPI. I mean, sometimes people say, kya hua desh mein, kya badla? You see the road, people at Bhajiwalas and, you know, all the people, roadside people are using UPI. Now, on that, UPI is just not a digital transaction activity. Now, on that, because trail is established, because for a long time, India kept saying inclusive economy, inclusive economy. I've heard this for 30 years of my life, and I'm sure it's been happening before my days also. But for the first time, India's actually doing inclusive economy. So let me say the fifth reason why India is going to become successful is because India is looking at a truly inclusive economy. It's not just a large reforms like GST and IBC, which are all big, important things, but also developing inclusive economy at the bottom of the pyramid. You know, all of us know that India has, you know, given under the Ujjwala program, given LPG connections, given electricity connections, given bank accounts. India had 400 million people without bank accounts until maybe 10 years ago. Can you imagine? It's like living in the 15th century or 14th century. That time also people didn't have bank accounts. Today also India didn't have bank accounts, right? So only now in the last 7 years it's got fixed. So now the new term of inclusive is not really opening bank accounts, because that's an achievement already done. Now the new term of inclusive economy is inclusive credit, inclusive insurance, so that everybody get insurance, inclusive mutual funds, so that people are able to invest in, you know, markets, etc. So this is the fifth factor. I mentioned four. The fifth factor is developing an inclusive country, and this is something that has to, India's doing it. India has to stay at the cutting of it, and no amount of inclusion has happened. Despite all the talk and effort and priority sector and all that, nothing happened except the last few years after digitization happened and a continuous effort to make it happen. I'm telling you, there is no call from this government ever to say that lend to this company or lend to that company. There's never, neither our bank nor any bank in the country is getting it. That's wonderful, really. It really makes for a super clean, you know, decision-making processes which are purely on merit, but there is direction, there is intervention to say that we should be in this a part of the economy. You know, the other day I heard the finance minister speak that India has lent 23 lakh crores to under the Mudra program. Could you have imagined? In earlier days, if you had given 23 lakh crores, I can tell you 20% of them will be NPA only. Now, hardly an NPA. We are lending and 23 lakh crores under three programs. Okay, there was a Shishu program, which was less than 50,000 rupee lending. Then there was that Tarun program, which was 50,000 to 5 lakh rupee lending. And then there was, you know, there's one more after that. And that was above 5 lakh to 10 lakh. In these three categories, India's lending is about 23 lakh crores. And performing fantastically well. I'm telling you right now in this forum, you can see a public investor presentation for our bank. We have lent close to 30 million customers in the last maybe 10 years or 12 years of our existence. And delinquency is hardly there. Poor people repayment is fantastic. Fantastic to say the least. NPA in this segment, credit loss in this segment is just about 1 to 1.5%. Collection is running like 99.5%. And therefore,
this amount of inclusion that has happened is one of the more powerful reasons, because not entrepreneurship at the top, which we should do, is a great thing to do, but entrepreneurship even at the bottom, entrepreneurship at the top, through PLI schemes, etc. But entrepreneurship at the bottom of the pyramid is also coming up beautifully in this country. And this is the sixth reason. I mentioned 5 reasons. The sixth reason is inclusive economy. The seventh reason, and that is probably my last reason, there are many more we can go on, but in the interest of time, is green economy. I heard Minister once talk about one sentence he spoke, really stuck on my mind. He used the term jal, jungle, jameen, janwar. Okay, Minister said that to us right now. Thank you very much. Just think about the power of that thing. Jal, jungle, jameen, janwar. Okay, now developing a green economy because it's just not GDP and tall buildings and Manhattan kind of buildings. It's all about jal, jungle, jameen, janwar. So if you think about that, let me call that the seventh big reason why India is looking good for us. I really feel that this is one of the rare moments in our lives and lifetimes when we also have a strong government and also have a reformist government. ऐसा normally मिलता नहीं है किसी को, मतलब पता नहीं how many countries get a government like that for 20-30 years at a stretch, whatever. Because sometimes you can have a very strong government but can have it ideologically taking you left and leaning and doing poverty-in methods and redistributing poverty all over the place. And we've seen that also. Sometimes you can have a strong government, you can have a weak government wants to reform but cannot do. The other day I was speaking to Shekhar Gupta, talking of this thing of, getting things done. He told one story about our former Prime Minister, very beloved person, Mr. Vajpayee ji. He said that someone once talked to him. He was getting one very important reform done. And at that time, it was a difficult reform, important but very difficult because a lot of populist things were going around. So someone told him that Vajpayee ji, ye to nahi karna chahiye, parliament mein bahut halla ho jayega. Just look at his response. He said, "Ab halla mein clear kar dijiye." So something, entrepreneurial government gets things done. Our government is getting things done. We are very delighted. We can see the 7 things I told you about entrepreneurial government, this, that, green economy, influence, all the things I told you. So I think that we are in a very, these are some very powerful reasons. There are many more, but we lost a lot of time. I told you that to be a $400 economy, $350, when others are running $7,000 is a big wasted opportunity for our country. But now we should do it because we can see our people are still poor. A good portion of India is still poor. And if you want to come out, we need this. And I read Mr. Amitabh Kant's book recently. By the way, it's a wonderful, absolutely beautiful book. If if those who haven't read it must go through it. Lastly, for our bank, just a quick 10 seconds just to share with you that we are very, very focused. We're trying to build a really world-class bank. I don't claim we are there yet. We're a new bank, but we have kept our aspiration to build a world-class bank. We made a profit over 2,400 crores last year. So we've massively turned around. And we are trying to build a truly, truly, truly clean bank. In terms of habits, practices, culture. It's very important. Those are foundation stones. And it is reflecting in all our products or services. So I really look forward to goodwill. And that's about it. So thanks very much, ladies and gentlemen. It really is a pleasure talking to all of you. And really, on behalf of all of us, let me just hope that we keep this entrepreneurial streak of our country keeping going ahead. Thank you very much. We surely will. Vaidya, thank you so much for that. Mr. Jain, thank you as well for joining in on stage. Now, also, ladies and gentlemen, please welcome in the house the G20 Sherpa of India, Shri Amitabh Kant. A huge round of applause, please. Inaugurating the 8-lane expressway in India's capital, he termed the structure Pragati Ka Highway, the road to progress. And he couldn't have termed it any better. His aim is to equal our road infrastructure to that of the United States of America by 2024. And under his leadership, India has seen dedication and ingenuity in advancing our road infrastructure. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Minister for Road Transport and Highways, Government of India, Mr. Nitin Gadkari. We would also like to invite Group Editor, Times Network, Navika Kumar, and Editor-in-Chief of Times Now, Navbharat, to join the Minister on stage
for a fireside chat on building India's highway to the future. नमस्कार गडकरी जी, आपको तो बहुत से खिताब मिले हैं, द हाईवे मैन, द एंटरप्रेन्योर, मिनिस्टर। आपकी सोच ऐसी है कि बिजनेस और इकोनॉमी आगे कैसे बढ़े। 9 साल जो मोदी सरकार के रहे हैं, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो शायद रोड और हाईवेज के सेक्टर में है। 54,000 kilometers of roads, and the average building of roads has gone up from 12 kilometers per day to about 28.5 kilometers per day. Nitin Gadkari ji, huge round of applause for the minister. नितिन गडकरी जी, एवरीबडी वांट्स टू नो कि सीक्रेट क्या है इस सक्सेस का। कौन सी चाबी लगाई है आपने कि ये काम जो पहले धीरे चल रहा था वो अब तेज हो रहा है? सबसे आपके बात को सुधारता हूं। इंडस्ट्री और बिजनेस बढ़ाना ये तो देश के लिए अच्छी बात है, पर मैं ये मानता हूं कि इंडस्ट्री और बिजनेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने वाले जो इन्वेस्टर हैं, they are not only wealth creator, they are employment creator. और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी। अगर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अगर करनी है, सही में हमको ये सपना पूरा करना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से रोजगार निर्माण करना होगा। और रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप करना होगा। जब हम 3 चीजें डेवलप करेंगे तो हमको 4 चीजें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दैट ये नहीं होगा। और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी, तब तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड, बिजनेस डेवलप नहीं होगा, तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा। और रोजगार जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। और मैं केवल एक छोटी सी बात आपको मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बता रहा हूं, जो आपको आगे की विजन में बहुत मजबूत करेगी। कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये टोटल साइज है इंडस्ट्री का 7,50,000 करोड़। इसमें से 3 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और अभी हमने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। ये जो इंडस्ट्री है, इसने देश में 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए अभी तक। और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी दिया है। अभी हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे थे, पर अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3rd नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर हम हैं, और 4थे नंबर पर अब जापान चला गया। ये जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं विश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। और जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रधानमंत्री का जो सपना है, वो पूरा होगा। जो बात आपने हाईवे के बारे में बताई, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ। बहुत लोगों को एक परसेप्शन है कि मैं इंजीनियर हूँ। अभी फिलहाल मुझे 6 डिलीट मिली। तो मैं 75 में एसएससी में था, तो इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में मैं बाहर निकल गया। तो मुझे 52% ही मार्क मिले हैं और साइंस में 49.26% मिले। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। तो अब मुझे कभी कभी 6 डिलीट मिलने के बाद भी डॉक्टरेट लगाने के बारे में बहुत संकोच होता है। तो मैं कोई इतना होशियार नहीं हूँ। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय एक बार मीडिया में कही थी कि मुझे धीरूभाई अंबानी जी का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर उस समय मैंने रिजेक्ट किया था। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय 3600 करोड़ का था 96 में। तो स्वाभाविक रूप से ये कैसा होगा, तो मैं पुणे में गया था
एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप ये रोड कितने साल में पूरा करोगे? मैंने कहा 2 साल में। तो आपको पैसे कितने लगेंगे? तो मैंने कहा 1600 करोड़ 1800 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो पूरी मीडिया लोग हंसने लगे। और एक ने पूछा कि आप कुछ भी बोलोगे और हमने लिखना चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? नहीं। तो कौन सी बात है कि आप बोल रहे ये होगा? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया और वो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा ये कहा उनको कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो माई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, fast track decision making process, 100% corruption free system and commitment for the quality। कुछ बातें जो है वो और कुछ जो है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर से जब डील करता हूं तो अच्छा काम करता हूं तो पब्लिकली तारीफ करता हूं, और काम गलत होता है तो उसकी धुलाई करने में भी कोई संकोच नहीं करता है। लेकिन नितिन गडकरी जी, यू आर कॉल्ड द मोस्ट फ्रैंक मिनिस्टर, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप बता नहीं सकते आज ऑडियंस को? मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेकिंग न्यूज बने। सर, आप हमारी पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? हमारा ब्रेकिंग न्यूज का धंधा है। देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूं कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है, मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था वो और मेरे एमडी, हम मुंबई खंडाला लोनावाला रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। हमारा जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, वो एक्सपेंशन जॉइंट्स, मुझे याद है मैं 95-2000 में मंत्री था मुंबई में। अगर आपको मौका मिला, आप मुंबई से ज्यादा हो, ये जो जे हॉस्पिटल से लेकर वीटी तक फ्लाईओवर बना है, एक श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है, अभी शायद नहीं है वो हांगकांग से मैंने उनको लाया था। उसके एक्सपेंशन जॉइंट देखो, कभी आपको पेट पे पानी नहीं मिलता, बेस्ट है। गैमन ने बनाया था ब्रिज वो। अभी हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स, तो मैंने देखा ये कहां से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब मेरे ध्यान में आया कि सहारनपुर में ये कोई हथौड़ा टेक्निक से कोई बना के लगाते हैं। फिर मैंने जहां जा गया तो मैंने बोला देखो एक्सपेंशन जॉइंट्स खराब निकले तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की धुलाई करूंगा। अब वो धीरे धीरे होके अब क्वालिटी सुधर गई। पहली बात यह है कि क्वालिटी के बारे में दो चीजें आवश्यक है। वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरी बात, वैसे भी मुझे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत प्रेम है तो मैं 1/3 यूज को कम करना चाहता हूं। और तीसरी बात, हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आसाम के बांबू को लाकर क्रैश बैरियर बनाया और वो ऑल टेस्ट पास करके अब सक्सेसफुल और देश में हम उसको लगा रहे हैं। हमने 50,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। 3.5 करोड़ ट्रीज हमने 3 मीटर के ऊपर की प्लांट की है। और अभी परली जो होती है, राइस स्ट्रॉ, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण है, तो हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। अब हमने तय किया है 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 30 लाख टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने तय किया है कि अब ये बिटुमिन सक्सेसफुल हो गया हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, और आईसीसीआर ने प्रूव करके टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया कि बिटुमिन से राइस स्ट्रॉ, परली से हम बिटुमिन बनाएंगे। तो अब मैं 30 लाख टन बिटुमिन हमारे किसान बनाए, इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। हमने दिल्ली में 3 कचरे की टेकड़ी है, अभी उसको हमने डाउन कर दिया। 20 लाख टन कचरा ये UER2 रोड में हमने डाला
और अहमदाबाद डोलेरो रोड में 20 लाख टन डाला, और अभी हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि हम कचरे को रोड के अंदर डालें। हम 7% प्लास्टिक बिटुमेन में डाल रहे हैं, और जो रबर टायर होते हैं उसको इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। वेस्ट जो सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात हो रही है वो बहुत बड़ी है, इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ। तो मैंने भूपेंद्र जी को कहा कि इसको परमिशन दो, और आज हम वो रबराइज पाउडर बिटुमेन में डालकर रोड की क्वालिटी भी सुधर रही है और कॉस्ट भी कम हो रही है। तो हमने अभी बहुत सी बातें ऐसे कर रहे हैं हम लोग, जिसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल पर भी मेरी मिनिस्ट्री बहुत, आज मैं हाइड्रोजन कार में आया हूँ यहाँ। बिल्कुल, आज आपने स्टेटमेंट दिया है, हाइड्रोजन कार में आप आए हैं, बायोफ्यूल्स पे बहुत काम किया है आपके मंत्रालय ने। इकोलॉजिकली यू आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस। साइड प्रोडक्ट केजरीवाल जी की भी हेल्प कर रहे हैं, सारे कचरे के ढेर कम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं करता और किसी की विरोध नहीं करता। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज माय बिजनेस, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं मानता हूं ये देश सबका है। प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो देश के लिए आवश्यक काम है वो कोई भी गवर्नमेंट का हो, मैं उन नसीबवान लोगों में से हूं कि माय आइडेंटिटी, मेरी आइडियोलॉजी बहुत ओपन है, एंड माय आइडियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। पर मैं पार्लियामेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में जब चर्चा हुई तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 75 लोग बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सबने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया। तो मैंने उनको कहा कि जो सही काम है वो सबका होगा और गलत काम अपने का भी नहीं होगा। तो जो काम होता है, कोई वो कचरा उठाना, ये कोई केजरीवाल को मदद करना या ये बात नहीं है। दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करना हमारा मिशन है। मैं 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहा हूं, और इस साल एंड में मेरे 90% काम पूरे होंगे। और ये 65,000 करोड़ है ना, वो जैसे हवा वाली बात नहीं है, ये लिस्ट है मेरे पास प्रोजेक्ट की, और डेट है कौन से तारीख को कौन सा पूरा होगा। और दिल्ली ये वर्ल्ड का पोल्यूटेड सिटी है, और दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने का एक प्रोग्राम हमने तैयार किया है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि ट्रैफिक जाम कैसे होता है पूरा, उसका स्टडी किया। और दिल्ली को अब ब्यूटीफाई भी करना है, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाकर, ये जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति देकर दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, ये कार्यक्रम किया। और ये महानगर पालिका भी सहयोग मिलती है, डीडीए का भी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का। 6,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो यमुना में दूषित पानी को सुधारने के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए, जायका का बड़ा प्रोजेक्ट दिया। तो ये कभी हमारी सरकार में हमने इस प्रकार से राज्य सरकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। Mr. Nitin Gadkari, you have many achievements to your credit. Whether it is building 100 kilometers of roads in 100 hours, whether it is taking up the average road building speed from 12 kilometers to 28.6. But has it been good going all through, or have there been problems on the way and structural problems that you still feel need to be addressed and that need a little bit of further push? देखिए, 2-3 दिन पहले मैं NHI में गया था, और हमारे आरओ पीडी करीब 400-500 लोगों की 2 दिन वर्कशॉप हुई। मैं उस दिन भर था। स्वाभाविक रूप से एक बार NHI की बिल्डिंग बनी तो वो 1.5 साल के बजाय 4.5 साल में बनी, और मेरा भाषण था इनॉग्रेशन का, और मैंने खूब भाषण में धुलाई की। मुझे भी पता नहीं कि मैंने बोला, मैं और ऐसे लाइट मूड में मैंने कहा कि मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं क्यों करूं। आप 1.5 साल का काम 4.5 साल में किया, 150 करोड़ का काम 460 करोड़ में लेके गए। तो मेरा भाषण इतना वायरल हुआ कि मुझे यूट्यूब से वैसे हर महीना बहुत पैसा मिलता है। तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत जगह पर पहुंचा है। प्रॉब्लम यह है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। मैं अभी भी समाधानी नहीं हूं पूरी तरीके से। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो सिस्टम में है। एक चीज आपको कभी इसको आप सोच के आगे बढ़ा सके तो जरूर करिए। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट।
बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इस बार पहली बार मैंने पीडी और आरओ को परफॉर्मेंस ऑडिट का सेक्रेटरी को देकर एक चार्ट दिया है कि आपने इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस का क्लियरेंस कैसे किया, लैंड एक्विजिशन कैसे की, कितना काम अवार्ड किया, कितने ब्लैक स्पॉट आपने इंप्रूव किए, आपके एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे 25 विषय निकाले। और मैंने उनको कहा कि इस 25 सब्जेक्ट के ऊपर आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा होगा वो चेक करेंगे, बाद में आपको प्रमोशन देंगे, सीआर में वो लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हम सबको आपको दे देंगे, अच्छा ऐसा नहीं होगा। समवेयर अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए और जो काम नहीं कर रहे उनको कहीं ना कहीं सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, बट इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड सैक देम। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, कंपटीशन होती है। अब हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7, और ये मैंने थोड़ी किया है। दैट क्रेडिट इज नॉट नितिन गडकरीज क्रेडिट, द क्रेडिट गोइंग टू द टीम। और मैं उनको अच्छी बात मैंने समझाई कि वो बहुत ही मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, द टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, उसका जवाब आता है A square plus B square plus twice AB, and twice AB is a result of collective team spirit. And collective team spirit में मैं अक्सर याद रखता हूँ कि human relationship is the biggest strength of politics, business and administration. My relationship with my subordinate people is equally important. और मुझे लगता है कि हमारे लोग रात दिन काम करते हैं। तो आज इस समय क्या हुआ कि जो सक्सेस स्टोरी थी, जो रोड बहुत अच्छे तरह कम समय में हुआ, जिसको बोनस मिला, उसका प्रेजेंटेशन हुआ। और जो 5 साल से चल रहा है, किन किन लोगों ने, जो भी इन्होंने कहा ना प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी, तो वैसे ही मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट के विलन कौन कौन है, किसने रोका, निकालो उनके नाम लो। और फिर उसकी केस स्टडी हुई, और केस स्टडी होने के बाद ये पता चला कि हम ये मिस्टेक रिपीट ना करें। मिस्टेक एक बार हो सकती है, करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक ही मिस्टेक 10 बार करने का अधिकार नहीं है। तो धीरे धीरे वर्क कल्चर बदलता है और और लोग ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी रात दिन काम करते हैं, और कलेक्टिव टीम स्पिरिट के कारण ही जो कुछ है वो मिलता है। मंत्री करके मुझे ज्यादा क्रेडिट मिलता है। नितिन गडकरी जी, even though you had 49.26% in SSC, आपकी अलजेब्रा तो बहुत अच्छी है। लेकिन 400 प्रोजेक्ट्स अभी भी किसी ना किसी लॉक जैम में फंसे हैं। इनको निकालने के लिए आगे क्या प्लान? देखिए, ये सच्चाई नहीं है। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट होता है वो छोटे से काम के कारण भी नहीं मिलता। जैसे एक छोटे से 100 किलोमीटर के रोड पर 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता तो प्रोजेक्ट बंद रहता है। वो हम लोग क्लियरेंस के पीछे लगते, जब मिलेगा तब उसको फिर करते हैं, तब तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है। कई लैंड एक्विजिशन की केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो स्टे देते तो वो लटक जाता है। तो इसलिए ये 400 में से सीरियस जो है वो 30-40 प्रोजेक्ट है। पर आपको मैं बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना, ऐसे हमारे IDBI बैंक वाले, इनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट थे, तो उस समय 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। 3 लाख करोड़ का लगभग NPA हो गया था। और मेरे डिपार्टमेंट ने और हमने लगातार रात को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक बैठकर बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी बैठकर हम बैठते थे। एक सेक्शन ही था, और मैं आपको ये विश्वास के साथ बताता हूं कि हमने 3 लाख करोड़ के NPA से भारतीय बैंकों को बचाया। और मैंने अभी बैंकों को भी कहा कि तुम परफॉर्मेंस गारंटी देना है, ये 1-1 साल 6-6 महीने देते नहीं। तो मैंने अभी इनका बिजनेस खराब किया। मैंने कहा हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए और अभी हमने उसको लॉन्च किया। अब 3-4 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ की बैंक गारंटी हमारे आती रहती है, जाती रहती है। अब इंश्योरेंस बॉन्ड आ गया, इनका बिजनेस चला गया, अब तुरंत होगा। तो जितना रिफॉर्म करना है सिस्टम में, जगह जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं लेना, जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना। अभी मशीनरी जो है वो डीजल पे चलती है। अब मेरा एक प्रयास है, कठिन है वो,
कि अभी मशीनरी को हाइड्रोजन पर और उसके साथ साथ एलएनजी पर और इलेक्ट्रिक पर कैसे लाए, इलेक्ट्रिक ट्रक का कैसे उपयोग हो। तो मैं सोच रहा हूं कि हम ऐसी पॉलिसी करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल को छोड़कर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेंगे उनको हम कुछ इंटरेस्ट कम करके कुछ लोन देंगे। अभी ये जो सेग्रीगेट करना है कचरा, इसके लिए एक मशीन लगती है जिससे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक सेग्रीगेट होता है और वो वेस्ट फिर हम लोग रोड में डालते हैं। तो मैंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, वो मशीन कचरे पे लगाएगा और पूरे कचरे से हमारी जो हम एग्रीगेट दूर से ला रहे हैं उसमें हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करो, उससे लाने से ही हमको पुराएगा और वो अपना काम कचरा खत्म करके डाल के बाद में मशीन बेच देगा या जो करना है वो करेगा। तो वायबल है। धीरे धीरे ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव है कि जिससे हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा करें और कॉस्ट को भी कम करें। तो ये भी कोशिश हमारी चल रही है। नितिन गडकरी जी, काम जितना भी हो, मिनिस्ट्री जितनी भी चलानी हो, अल्टीमेटली तो जिंदगी पॉलिटिक्स पे चलती है। आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज को क्यों कन्विंस नहीं कर पाते? इस तरफ जो ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस का रिलेशनशिप है वो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप लोग सिर्फ सेंगोल को प्राथमिकता देते हैं, पार्लियामेंट में लाते हैं, lying down and all that करते हैं, लेकिन the real problems of India are price rise, bad education, unemployment. How do you respond to Mr. Rahul Gandhi? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि जो पॉलिटिक्स मैं करता हूं और मैं आपको कहूंगा कि कभी आप इस बात को मानने होता है तो इसको जरूर प्रोपोगेट करिए। पॉलिटिक्स जो है वो पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। We need to have now redefine the definition of the politics. Politics का मतलब, राजकारण का मतलब समाजकारण, राष्ट्रकारण और विकासकारण। राजनीति का मतलब लोकनीति, बृहत्तर राजनीति या धर्मनीति। मैं 80% सोशल वर्क करता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार देने में सेवा करना इज ए ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे आपसे भी शिकायत है, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस से पावर पॉलिटिक्स को देते हैं। ये बहुत ज्यादा चलता है, इसने क्या क्या, उसने क्या कहा। अब लोगों में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोग नए इनोवेशंस, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, किए हुए अच्छे काम ये देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। तो ये जो कुछ चलता है, ये जो बेंच होते हैं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो वो बेंच में आदमी बैठने के बाद वैसे ही बोलता है उसका कारण अपोजिशन वाला अगर थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो आप तुरंत हेडलाइन दे देते हो, अपोजिशन वाले ठंडे पड़ गए। वो बोलता है ऐसा लिखा है क्या, और गर्म होके बोलता है फिर। अच्छा, तो ये हमारी गलती है कि राहुल गांधी ऐसे नहीं, बोलते हैं? देखो, अपोजिशन पार्टी में उनको ये बोलना ही है। मुझे बताइए कि 75 साल में जो कांग्रेस को इतने साल मिले, उन्होंने एजुकेशन से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब बातों का आप एक बार कंपैरिजन करिए। जो इस 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया, उसकी तुलना करें तो कई गुना हमने ज्यादा काम किया है। ये उनको भी मान्य है, जब अनऑफिशियली बोलते तो अच्छा काम हुआ करके मान्य करते हैं। पर एक बात, 100% सेटिस्फैक्शन और 100% काम हुआ ऐसा कभी नहीं होता। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिलती है उसको कार चाहिए, कार चाहिए उसको मर्सिडीज चाहिए, और मर्सिडीज है वो हवाई जहाज खरीदना चाहता है, और जो 4 हवाई जहाज खरीदता है वो भी दुखी होता है तो ये कभी ना कभी ऐसा है कि समाधान मानने पर होता है। पर एक बात जरूर है कि जो आपके इकोनॉमिक ये जो डिस्कशन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में हमारी 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52 to 54% सर्विस सेक्टर से आता है और 12% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। हमारी 65% पॉपुलेशन रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इंडिया के साथ डिपेंड करती है। जो बात उन्होंने कही, जल, जमीन, जंगल और जानवर, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि किसान अन्नदाता नहीं, अब ऊर्जादाता बना। आपको याद होगा 2004 से
मैं इथेनॉल मैंने स्टार्ट करके चिल्ला रहा था, आज वो 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गई। अब हाइड्रोजन कचरे से बनेगा, गंदे पानी से बनेगा, और किसान अब डांबर से, बायोमास से बिटुमिन बनाएगा, और बांबू को काट करके व्हाइट कोल बनेगा। रूरल एग्रीकल्चर की इकोनॉमी बदल जाएगी। जिस दिन हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22% पे नहीं लेके जाएंगे, तब तक हमारा देश दुनिया में आगे नहीं जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स और करीब 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया। अमिताभ कांत जी बैठे नीति आयोग में जब ये थे, तो नीति आयोग ने ये आइडेंटिफाई किया। और मैं ये इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में आपको आग्रह से एक ही प्रार्थना करूंगा कि ये जो 65% पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान यानी मुंबई और दिल्ली नहीं है। हिंदुस्तान यानी गांव में बसे हुए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जो 65% आबादी है, उनके सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम हमारी सरकार कर रही है, वही मुझे लगता है कि उसी की गति और मिलेगी, और उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बन पाएगी। और उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। और काफी हमारी योजना जो है वो रूरल सेंट्रिक, एग्रीकल्चर सेंट्रिक। अभी एक ही बात बताता हूं आपको, टूरिज्म। अब मैं देहरादून गया था, अब मैं देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे। अब मैं जा रहा हूँ 15 दिन के बाद उद्घाटन के लिए तीरथपुर से, वो 3-3.5 घंटे में। यानी आप दिल्ली से मनाली आप 5.5-6 घंटे में जाओगे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। तो नेचुरली क्या हुआ इसका फायदा, जो मेरे ध्यान में आया कि छोटा जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास था, वो मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ। वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और टूरिज्म पे जा रहे हैं। केवल रोड अच्छा बनने से उत्तराखंड का टूरिज्म दुगना हुआ। अब टूरिज्म दुगना हुआ तो होटल, रेस्टोरेंट्स, मोटेल्स, कार, टैक्सीज, बसेस, सबके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि टूरिज्म में 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। तो अब हम जो काम कर रहे हैं, रोड, मैं बात ही नहीं करता ज्यादा रोड की, अब रोड बनाने के बाद इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए टूरिज्म, लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अभी हमने 1,30,000 करोड़ की हम 260 रोपवे, केबल कार, पैनाकुलर रेलवे बना रहे हैं। अभी मैं होटल के सामने से गुड़गांव तक, वो मैं हवा में चलने वाली स्काई बस के प्रोजेक्ट का स्टडी कर रहा हूँ कि हवा में लोग जाएंगे बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में, ऊपर के ऊपर। तो दिस टाइप ऑफ न्यू इनोवेशंस, ये और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों के विकास से हम विकास कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। 2024 हम जीतने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है, रास्ता कठिन नहीं है। वो जो जॉइंट की आप बात कर रहे थे, कोई बम्प नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर इस फिलॉसफी पे विश्वास रखता हूँ कि जो ज्यादा भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे टीचर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते थे। मेरी बैटिंग अच्छी थी पर मैं बहुत जल्दी, जैसे आई लाइक, उस समय मैं श्रीकांत हूँ, कृष्णमाचारी श्रीकांत एक प्लेयर थे, वो जब वेस्ट इंडीज वगैरह बहुत ऐसी बैटिंग करता ना, फिर मैं, फारूक इंजीनियर मुझे लंदन में मिले, अब बहुत बूढ़े हो गए, वो क्रॉस बैट से भी खेलते थे। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि रन निकलने चाहिए, और रन निकालते समय बैट्समैन ने सोचना नहीं चाहिए कि मैं कितने समय क्रीज पर हूं, बॉल आया कि मारो छक्का, आगे चलते रहो। वही स्पीड है, आगे आगे देखो होता है क्या, चिंता मत करो। भविष्य की जो चिंता करते हैं वो दुखी होते हैं। हमने अच्छा काम किया है, अच्छे ही परिणाम आएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 24 में देश के विकास के लिए जनता हमको ही चुनकर देगी, ये मेरा विश्वास है। Well, he's hit it out of the park. That's a sixer. Nitin Gadkari, ladies and gentlemen, put your hands together. Thank you very much, Mr. Nitin Gadkari. Thank you so much, Navika and Honorable Minister, for your insights. Ladies and gentlemen, I would now like to introduce my co-host for the next sessions, National Editor, Times Now, Madhav Das Gopalakrishnan. Madhav, hi. Hi, Aisha. Thanks so much for that introduction. Delighted to be here on to our show now.
India's helming of the G20 leadership is of historic significance and a moment of pride for Indians as the world's spotlight shines brightly on us. The G20 is unique insofar as it brings together the developed and the developing nations to discuss and create solutions to global governance challenges. India can effectively bridge this divide by forging consensus on key global issues. India has set several goals and objectives for the G20 presidency, with key focus areas that include digital transformation, climate financing, sustainable developmental goals, and food security, amongst others. Exactly, Madhav. For India, the G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kal, the 25-year period leading up to the centenary of its independence, towards a futuristic, prosperous, inclusive, and holistically developed society distinguished by a deeply human-centric approach at its core. To effect India's is hosting of over 200 meetings in over 50 cities across 32 different work streams to fulfill the magnanimous vision, one Earth, one family, one future. India is leading the G20 juggernaut, ladies and gentlemen, and it is an honor to have with us here the G20 Sherpa of India, Shri Amitabh Kant, and may I please call upon the Editor-in-Chief for Times Now and Editorial Director, Rahul Shivshankar, for a fireside chat. Rahul, we also request you to please felicitate the G20 Sherpa, Mr. Amitabh Kant, with a token of our appreciation. Very good morning, everybody. We're chipping into the afternoon, and we're going to have a wonderful session with our G20 Sherpa, Mr. Amitabh Kant. It's a real delight to be speaking to you. We spoke about 6 months ago, I think, Mr. Kant, at one of these events, I think the Times Now Summit. How are things going? Rahul, they're going very well. I think we've exceeded expectations. We've had over about 115 meetings in over 50 cities of India. We plan to have about 200, close to about 220 odd meetings in over 60 cities of India. That's really taking G20 to the people of India and taking it across all the states of India. So that's almost like a people's G20 presidency. But more than that, we've given an opportunity to the states to show their art, their craft, their culture, and build their own brands. So this is a very unique G20, very, very different from G20 done in any other country. Let me ask you, India aspires to play the role of a Vishwaguru, and that's one of the real themes of our the IEC, the India Economic Conclave. How does assuming the presidency of a group such as this, a very powerful, influential group of nations, help us realize this ambition? So Rahul, if you look back over the years, in the last 5 or 6 decades, we've actually responded to an agenda set by the developed world, always. This is the first time that India is setting an agenda for G20, which accounts for about 85% of the global GDP. So we are setting the agenda and the world is responding to that agenda. And therefore, we've picked up a very positive, very constructive development agenda, which takes care of emerging markets, which takes care of the global south, and which takes care of a very global, a very human-centric global development. Well, let me be direct with you, and I like to be direct with some of my guests. The reason I asked that question of you and the fact that you suggest that we're setting the agenda, unfortunately, there are some who see India as a part of a problem right now. And that problem, of course, has exploded literally onto the global stage in Europe between Ukraine and Russia. How do you react to this when people say, some of our allies might whisper into your ear, look, we need you to be on the right side of history, for instance?
Rahul, let's understand that Russia-Ukraine is a crisis. It's an important issue. It's an important issue for Europe. But you must also understand that the COVID has left 200 million people below the poverty line. 100 million people have lost their jobs. 75 countries in the world are facing a global debt crisis. 1/3 of the world is in recession. The world is facing a crisis of climate action and climate finance. Aren't these important issues? These are very important issues for emerging markets and developing countries. These issues need to be brought center stage, not just the issue of war. That's a very interesting perspective, because as the EAM was also said, Mr. Jaishankar, that look, we don't want to be beating to the Western drum, so to speak. So India is forging this sort of agenda of being the leader of the global south. But leadership requires sometimes, Mr. Kant, to enunciate a principled approach, a morally upright approach to international crises. Do you believe that on this particular war, we are morally on the right side of history? Because the Ukrainians may not think so, for instance. And you need to evolve a common language, I suppose, for a communique when we host the presidency. So, Rahul, I think we are morally right, we're intellectually right, we are philosophically right, we are politically right in all these. And it's important to say that for us, we look at the world as a whole. And when you're hosting a G20 presidency, you need to bring all 20 countries together. The job of India is to bring consensus on a vast range of issues, including economic, developmental issues which are impacting the emerging markets of the world. We should not end up getting caught in just one issue. It's very important to look beyond this issue to understand what the citizens of the world are confronted with and find a solution to the challenges which the citizens of the world are confronted with. We should not get caught up in one issue which is maybe a challenge for Europe right now. But if we get just caught up in that one issue, we'll be forgetting all the other challenges which both emerging and developing countries are confronted with. It's very important to focus on all these issues, and that's very important right now. And how much of this messaging has percolated down to the other interlocutors? To everyone. Every single issue note that we've prepared, the Prime Minister was very clear that we need to focus on inclusive, resilient, and sustainable growth. We need to focus on accelerating the pace of sustainable development goals. We need to focus on digital transformation, which is a huge story of digital public infrastructure for India. We need to focus on a range of issues, including women-led development, which is a major priority for India to transform the world. Those are issues which will transform the world. War, unfortunately, disrupts the world. Yeah. And we have seen that this crisis has disrupted economic revival after COVID. So it does remain a big issue. Would you not agree? There needs to be some sort of a closure. So Rahul, war is a challenge. But irrespective of war in one part of the world needs to move on. Because we must understand that there's a cost of living crisis. There's inflation. There is a challenge of post-COVID era. And if we are not able to use our leadership to provide relief to huge segments of population where learning outcomes have been impacted, health outcomes have been impacted, if we are not able to provide an impetus to growth, if we are not able to provide impetus to climate action, if we are not able to provide increased resources for implementation of sustainable development goals, or if we are not able to make a difference to the lives of citizens, then we'll be failing. And therefore, our focus is very clear. Our focus is very steadfast. Focus on the positives, focus on the constructive issues, focus on what is impacting citizens rather than just getting caught up in one issue. We never get over obsessed with one issue. Very interesting. And I'm going to ask you to elaborate a little bit on India's aspiration to lead the global south, and a large number of countries already beginning to look at India from a leadership prism. But I'll just come to that one question back at this particular
sticking point, global sticking point. The Prime Minister's assertion that this is not an era of war helped G20 summiteers in Bali, and we talked about that, of course, to evolve a common language for a communique. Can we expect the Prime Minister to come up with an equally agreeable statement or perhaps diplomacy that could forge some sort of a consensus? This is an important stage for India. Yeah. We had a similar challenge in Bali, and actually in Bali, 17 ministerials had failed. And yet later we succeeded, and we succeeded because the Prime Minister was very clear. His vision was that this is not an era of war. This is an era of diplomacy and dialogue. And we use that to bring consensus all around. G20 is not a political forum. It is a forum for development, for growth, for financial progress and prosperity. And therefore, we used this language to actually arrive at para 3 and 4 of Bali. The whole negotiation was done around this. And we were able to bring consensus amongst all G20 countries, and India played a very key and critical role in that, in able to forge a unity and find a final solution in Bali. And we are very hopeful of doing this in India as well. Does it make you sad that the platform has become politicized? Rahul, we are living in a world of politics, but we should steer clear of our object. We should be absolutely laser focused on what our objective is. I mean, there will be politics. How can you avoid it? But the political issues are discussed in the UN, the United Nations Security Council. That resolution was used to find a solution here. We remain focused on economics, development, progress, growth. That is India's priority. But in para 3 and 4, since you brought it up, of the Bali Declaration, the Chinese and the Russian delegations were known to have sort of been a bit chary about the fact that the term war was used, quote unquote. Now that we've assumed the mantle of the presidency, what role can we play to smooth over such wrinkles? So we'll bring everyone around. We are very confident. We are very hopeful. Our objective is to really bring all the 20 countries, including Russia and China, on board and find a way out. And we are working very hard towards that. We are very positive. We are very optimistic. And we are being very futuristic. And on development issues, we are very hopeful that all 20 countries will come around. Everyone is impacted right now. We must understand this, that if we are not able to, when leaders of the world meet in New Delhi on September 9th and 10th, for them, the challenges of raising prosperity and progress, the challenge for them is that inflation is hitting 1/3 of the world. The challenge is that vast segments of the country, imagine 75 countries are hit by global debt. So for them, the challenge is that we need to find a solution to progress and growth. Mr. Jaishankar, in a recent newspaper op-ed, highlighted how India's foreign policy has been the greatest transformation in the last 9 years. Obviously, he was writing in the Times of India, and he was talking around the 9-year anniversary of this government. Now, to quote him, one of those transformations has been that the global south is increasingly looking to us. What factors have driven us to become a more reliable and trustworthy alternative to, let's say, the Chinese? So Rahul, foreign policy is a reflection of the brand power which domestically you establish, the credibility that you establish. G20 leadership of the Prime Minister is a reflection of the political and the development narrative that you've built up. So today, we've built up a digital narrative where we do about 11x fast payments of what America and UK do together, or America and Europe do together, including UK. 11x. We do 4x of what China does. We do about 50% of the real-time payments in the world. We've provided about almost 40 million houses. That's like providing a house to every Australian. We provided 110 million toilets to our citizens, which is like providing a toilet to every German. We provided 243 million piped water connection, which is like providing a piped water connection to every Brazilian. And as you just heard, we built 55,000 kilometers of road, 1.5 times the diameter of Earth. Now, all that is a reflection. And during COVID, we did 2.5 billion COVID vaccination.
6.5 times the population of United States and Europe put together. That is a reflection of your political development narrative that you've built up. So G20 leadership is about the political and development narrative that you've built up. And that gets reflected in your leadership, and that gets reflected in your foreign policy as well. Well, that's quite breathtaking. You have these statistics at the tip of your fingers. Not very long ago, the Prime Minister, of course, highlighted how multilateral forums are going through a crisis, and how questions have been raised on the credibility of their effectiveness in dealing with the wider world. And also, of course, institutions like the IMF, the WTO, and the UN. Is the G20 a way, a gateway, let's put it like that, for India to convey the need to these other big institutions to undergo change? So Rahul, we must understand that many of these multilateral institutions were established post-World War II. They were Bretton Woods institutions. They are not designed to face the reality of today. The reality of today is that you need more resources for climate action, at least emerging markets do. The sustainable development goals, you need more resources. You need vast amount of resources to flow into entrepreneurs who are pushing for climate action. Now, World Bank does a lot of direct finances. It is not able to raise a lot of private finance which is available. There are $350 trillion amount of dollars available from the private sector. But the risk of developing countries is very different from the developed world. And therefore, you get money at 2% in the United States and Europe. You get it about 8% in India. You get it about 16% in Africa. You get it 22% in sub-Saharan countries. Now, that makes it impossible for you to do large-scale funding. There's no shortage of money in the world. Huge amount of money is available with institutional lenders, with pension funds. You need blended finance, you need first loss guarantees, you need credit enhancement to enable those funds to flow into emerging markets like India. The important thing to understand is that the growth of emerging markets is going like this, the growth of developed world is coming down. And therefore, most of the growth will come from emerging markets in the next 4 to 5 decades. And you need resources to flow into emerging markets, not the other way around. Today's policies have led to resources from developing countries flowing to the developed world. That is not feasible anymore. You need large segments of population are in emerging markets, and therefore you need emerging markets to grow rapidly, and that requires resources which multilateral financial institutions must enable to flow in. And therefore, they need a redesign and restructuring. India took a very massive step recently to hold the G20 in Kashmir. And you piloted that. How was it received? I think it was a phenomenal success. I've never seen such a huge gathering of delegates from all the G20 countries barring one country. We had a lot of private sector participation, but the remarkable thing was that the people of Kashmir welcomed it with so much of warmth and enthusiasm. And they were fully participating in it. And secondly, I was delighted to see the huge development, particularly the Srinagar smart city development, which has taken place in Kashmir. So it was really refreshing. And I can tell you that all the delegates who came, they want to come back to Kashmir with their families and friends, and they will become the biggest brand ambassadors of Kashmir. This was a great success story. I don't want to make this political, but there are many from what now is loosely labeled the ecosystem who said that this was all synthetic fervor. It's all contrived, that the police were hidden behind nice banners, this, that, the other, and you could see that normalcy was just a creation. How do you respond to that? Well, all the delegates went out shopping like normal citizens. They bought a lot of Kashmiri handicrafts and handlooms. They went into the Dal Lake, very far and wide. You must have seen a lot of pictures. They were all like normal citizens, like you and me. I went
doing cycling on the smart city area, and I was walking around the city. It was absolutely normal. I've never seen Kashmir so refreshing, so nice, and beautiful warmth of the people. I mean, more than anything else, the people of Kashmir really welcome the G20 in a very big way. Well, let me ask our audience here, how many of you have been to Kashmir in the last few years? Wow. I think that's the answer. So you see the response. I think it's a fabulous tourism destination. And I was delighted to see a vast number of tourists coming in from all parts of India into Kashmir. And all of you many of you have been there, but all of you must go there. And the people of Kashmir want normalcy more than anything else. And they are all normal. Actually, we make a huge issue out of it, but they were absolutely normal, and they were full of tremendous amount of love and warmth. A quick voice vote here in the audience. Did you feel the normalcy? Well, I think that's quite a strong enunciation. No, absolutely So then let me normal. ask you, it must hurt that countries like Saudi Arabia that we're really developing ties with, Egypt, Oman, and Turkey. The Prime Minister recently congratulated Erdogan on his victory there. They weren't on board. No. You see, one thing, Rahul, we must understand that travel and tourism is also a private sector activity. From taxi driver to tour operator to travel agents to hotel owners are all private. So many of these countries were represented by the private sector in a very big way. Other than China, everyone was present there. So they were just posturing. Yeah. So everyone was present. Okay, that's reassuring. Yeah. The Western media, of course, stuck to its guns on Kashmir, saying, and you know the headlines. You've seen them in The Guardian. You saw them in other leading publications. Why do you think they're so invested in talking down the story? They have many of these intellectuals across the world have a particular perspective which has existed with them for 7 decades. I think we are in the midst of busting that in a very big way in terms of our growth. I mean, we are the largest growing economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. We are going on to become the 3rd largest economy in the world. We must be confident about ourselves. We shouldn't worry too much about a little bit of criticism here or there. We should just march on regardless. We should accelerate the pace of our growth. That is what we are doing through infrastructure growth. We've provided 150% more allocation for infrastructure in the last 3 years, which has never happened in the history of any country. So we are a confident young nation. Our average age is 29. Don't worry about Guardian writing something. Just move on regardless. Move on regardless. My final question to you. Mr. Khan, you're obviously being well received. Now I want to ask you this. When you look at September, if you were a newspaper editor, what are the headlines that you would write? Well, the next headline would be that G20 a remarkable success story and a great leadership by the India's Prime Minister. Can you elaborate on this? He's visionary. He's looking at the entire world from a human-centric globalization perspective. He's looking at the global south. He's looking at the emerging markets. It's his leadership. So I'm very clear that the Prime Minister will push this narrative in a very big way in terms of all the key issues, in terms of resilient and sustainable growth, in terms of acceleration of sustainable development goals, in terms of digital transformation, in terms of climate action and climate finance, and in terms of women-led development. It's his leadership, his vision, which will get translated all across the world. And some people are calling him the boss. Let me just ask you this, because it's an important one. How much does leadership determine the agenda, the narrative of meetings such as this? I would give it about close to about the three issues, and I'll give you the breakup. I think the political leadership and the development narrative in the leadership of G20 is critical and very, very important. And I think that's where India is scoring. The rest about it is the priorities
which we spell out, which has been spelled out by the political leadership, and how we execute it, which is very different. It's very different than doing World Cup in Qatar in 10, 15 days in one city. We've taken it to the people of India. We've taken it to all the cities and states of India. We've created state brands. And therefore, the political leadership and the political narrative and the developmental perspective of the Prime Minister has given a totally different dimension to the G20. No other G20 in any other part of the world has been done in such a dynamic, refreshing, vibrant manner as India has done. Ladies and gentlemen, Amitabh Kant. Thank you very much, Mr. Kant, and best of luck for your future endeavors. And may the G20 summit be a rocking event. Thank you, Rahul. Thank you Great very pleasure much. talking to you. Thank you. Thank you, Mr. Kant and Rahul. And ladies and gentlemen, before we move on to our next session, I'd like to announce that we have with us, amidst us in our audience here, Mr. Ricky Cage. We do look forward to his performance later on this afternoon. And Aisha, I can tell you, I had an opportunity to see one of his concerts abroad. It's an immersive experience. It's not just a conference, not just a concert, I beg your pardon. So we all look forward to that, Ricky. Thanks so much for joining us. And moving on. India is considered one of the fastest growing key economies in the world. It's increasingly playing an important role in the global economic stage. This year, as it holds the G20 presidency, India is perfectly poised to impact global policies and find pragmatic solutions for the benefit of all players. In fact, Madhav, our next speaker is someone who enjoys a 360-degree view of global macroeconomic movements. In fact, in a recent interview, he also mentioned that India is witnessing the famous snowball effect, which will lead to more jobs and more investments. He also believes that the growth is exponential, which will also lead to reduction in poverty and growth in opportunities available to the youth. He joins us today to share his thoughts on how India is leading the evolution of globalization. Please welcome the President of the World Economic Forum, Borhe Bread. Good evening. First, I would like to express my sincere appreciation to the Times Group for inviting me to the 9th edition of the India Economic Conclave. This gathering coincides with a moment of great opportunity for India. India is projected to see 6% growth this year and be the fastest growing major economy for the third year in a row. Congratulations on that achievement. When the snowball starts to roll, it gets bigger and bigger, and that is what is happening with the Indian economy. And India is now the largest country by population. It took, though, India 60 years to become a $1 trillion economy, but it may reach the next trillion in the next 2 years. The goal of reaching a $1 trillion economy has ridden on the back of India's digital revolution, which is a success story, not only for India, but for the world. Let me spotlight where I see India taking steps that are immensely beneficial across all these areas, not just for the country, but the global community as well. On the economy, India has solidified its position as the third largest hub for startup unicorns, with a total of 68 companies now valued at over $1 billion. It is also capitalizing on the yield from reforms that the government has put in place in recent years. And it is showing that growth must be inclusive by investing more in infrastructure, connecting different regions, and investing in people through upskilling, reskilling, and right skilling. On technology, India's IT sector has thrived, which helped make India a global powerhouse in software development, IT consulting, and business process outsourcing. The country's skilled workforce, proficiency in English, and cost competitiveness has attracted multinational corporations, facilitating the integration of the Indian economy into global value chains. It has built a world-class digital public infrastructure and the world's largest biometric ID system
Aadhaar that is transforming people's lives. And it has demonstrated the importance also on top of the IT development, on inclusive development through efforts to promote digital empowerment and last mile financial inclusion. I'm proud that the World Economic Forum is working with India on some of these efforts. We recently launched the Center for Advanced Manufacturing and Production through our Center for the Fourth Industrial Revolution Network. We're also working together on the environment, and on the environment in general, India is using an innovation mindset to address key global challenges such as global warming, and the transformation into renewables is really, really quite consequential and impressive. At a time when global cooperation has become so critical and yet so fragile, India is showing by example what can be achieved. India's G20 presidency is guided by the motto, One Earth, One Family, One Future. It has brought together not only leaders from government, but through the B20 business and Think 20 thought leaders. This is also very important to do it in a multi-stakeholder way. This approach is precisely more of what we need today, and it is why I'm optimistic when I see India helping lead in restoring cooperative approaches to our global challenges in a fragmented world. The G20 presidency could not have come at a more important time, and Indian leadership is more needed than ever. Good luck with your conference. Thank you very, very much. Thank you so much, Mr. Brene, for giving us that comprehensive perspective. Well, during the Amrit Kal, one of the 4 tenets for India at 100 is green growth. And as the third largest economy, India is leading the world into a green industrial and economic transition, putting into practice numerous policies and programs for the effective use of energy across various economic sectors, which also includes green buildings, green equipment, green farming, green mobility, and green fuel as well. Large scale green job opportunities are also being facilitated by these green growth initiatives, which also contribute to diminishing the national carbon emission. And to talk to us, in fact, about India acing responsible growth, please welcome on stage the Honorable Minister of Labour and Employment, Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Shri Bhupender Yadav, in a fireside chat with Padmaja Joshi. And I would please request Padmaja to please facilitate the minister first. A huge round of applause, please, ladies and gentlemen. Bhupender Yadav, you wear many hats, and each one of them is very critical to some of the goals that the government has set for itself, especially in the next 1 year, which is going to be the slog overs, as it were, before you get into elections. But I want to start by talking about an editorial that you've written today. आज आपने बोला है कि जो अमृत काल का आपका vision है, उसका symbol, the marrying of tradition and modernity, of all the things you said, is the installation of the Sengol. तो आपका जो अगले 1 साल का विजन है, अमृत काल का विजन है, why do you think it is all encapsulated in the Sengol? जो हमारे सिंबल हैं, वो केवल इसलिए सिंबल नहीं है कि हम उनको कोई रिलीजियस मान्यता देते हैं, वो हमें एक सही रास्ते पे चलने का मार्ग दिखाते हैं। अगर कोई प्रतीक इस बात का है कि वो न्यायपूर्ण शासन की जिम्मेदारी देता हो, और दुनिया भर में इसके लिए अलग अलग तरह की मान्यताएं रही हैं, और न्यायपूर्ण शासन का अगर कोई प्रतीक है और उसको अगर हम अपनी पार्लियामेंट में स्थापित करते हैं,
तो हम उसको वे ऑफ लाइफ में अपने स्वीकार करते हैं, जो किसी भी शासन करने वाले का कर्तव्य होता है। और इसलिए हमारी चाहे लॉजिक रहे हो, हमारा ओपननेस रहा हो, हमारा विभिन्न विश्वासों को आदर देने का स्वभाव रहा हो, हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे आधारित जीवन पद्धति रही हो, हमारी एक ट्रेडिशनल, जिसको तर्कशास्त्र कहते हैं, कि लॉजिक के साथ किसी विषय को समझने का स्वभाव रहा हो, ये सब हमारे अंदर हैं। तो हमको इसको विस्तार करके जो अपने पुराने एथिक्स हैं और वैल्यूज हैं, उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जोड़ना चाहिए। वैल्यूज पुराने होने चाहिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट नया होना चाहिए। दोनों को जोड़कर ये नया देश, जो जिसकी कल्पना अमृतकाल के भारत की करते हैं, वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की, क्योंकि आज हमारा थीम भी है मेकिंग इंडिया द थर्ड सुपर पावर। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि 80 के दशक में हम कंप्यूटर युग में कदम रख रहे थे और आज हम बात कर रहे हैं मंदिर की, सेंगोल की। तो हम एक थर्ड सुपर पावर कैसे बनेंगे अगर हम आगे देखने की जगह पुरातन में बार बार जाते जाएंगे और इन सब चीजों को, ट्रेडिशन की, कल्चर की, बिकॉज ज्यादातर लोगों के दिमाग में कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब रूढ़िवादी चीजें हैं। एक सुपर पावर की निशानी, सुपर पावर की निशानी कंप्यूटर। आप योग को क्या कहेंगे? आप बता दो कि योग गलत है, मैं मान लूंगा हमारा ट्रेडिशन गलत है। सिंपल है, बताइए। सो द योग, सेंगोल और इकोनॉमी। आप नीति शास्त्र को क्या कहेंगे? आप बताइए। आप टीवी पे डिबेट करती हैं। हमारा एक लॉजिकल दर्शन है जिसको न्याय शास्त्र कहते हैं और जिसको गौतम ऋषि ने लिखा है। उसका एक सूत्र है, वो कहता है प्रतिज्ञा हेतु उपनय उदाहरण निग्रह स्थाना। आप टीवी पे डिबेट करते हैं, आपने एक थीसिस शुरू करी, दैट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कोरिलेट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मस्ट डिपेंड अपॉन द लॉजिक। और जब आप स्टेटमेंट, एग्जाम्पल और लॉजिक को मिलाएंगे तभी तो आप कंक्लूजन पे आएंगे। तो आपका मियरली स्टेटमेंट कैसे मान लिया जाए? एक ही सांस में आप कह रही है मंदिर बुरा है, दूसरी सांस में आप कह रही है योग अच्छा है, तो आप खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हूं। I was actually taking off from what the former Congress president, कल राहुल जी जब अपना पहला दिन मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसी सेंगोल की बात छेड़ी और उन्होंने कहा there are bigger issues to be spoken of, things like the GDP, the economy, jobs, but to divert from it, they are, lying down on the floor and all that. आप उनको जरा आंकड़े पहुंचा दीजिए। जीडीपी जब जो आंकड़े आए हैं वो हमारी 7.2% ग्रोथ को दर्शा रहा है। पीएलएफएस के जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में जो हमारा रोजगार था 42.5 से आगे बढ़ा है। उनको आप ये भी डाटा मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए कि ईपीएफओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 लाख से ज्यादा हुआ है। तो ये तो आंकड़े आप उनको अगर भिजवा देंगे तो समझ में आ जाएगा उनको भी। भूपेन जी, what do you see the next 11 months like? आपने जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है, that also you hold as a symbol of what New India stands for. But can you have a new India जहां पर the relations between opposition and the government seem to be at a point of no return? For a superpower दोनों को साथ नहीं काम करना पड़ेगा। अगर आप दोनों अलग अलग दिशा में रहेंगे तो कैसे इंडिया सुपर पावर बनेगा? इनॉग्रेशन किस चीज का था? इनॉग्रेशन किस चीज का था? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन, जो देश के इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन था, उसको पार्टी ने क्यों बहिष्कार किया? इनॉग्रेशन अगर हमारा होता तो बहिष्कार समझ में आता। पार्लियामेंट को पावर कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार करें, आपको उनकी बुद्धि पे तरस आना चाहिए। मैं तो कहता हूं ईश्वर उनको थोड़ी बुद्धि दे,
कम से कम इस तरह के विषय तो नहीं करने चाहिए। और कांग्रेस ने जीएसटी लागू हुआ तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया, हम कोविड वैक्सीनेशन लाए तो ये बहिष्कार करने लगे, हमने जनधन खाते खोले तो कांग्रेस विरोध करने लगी। तो कांग्रेस समर्थन किस चीज का कर रही है कि केवल गांधी परिवार को सत्ता में बैठा दो, बाकी सबका विरोध करो? ऐसे थोड़ी देश चलेगा। देश एक परिवार के लिए थोड़ी होता है, देश तो सबके लिए होता है। और क्या न्याय का शासन नहीं होना चाहिए? और न्याय का शासन, अगर न्याय के शासन का कोई प्रतीक है तो वो नहीं होना चाहिए। क्या देश को आजादी मिली तो हमने अशोक की लाट को स्वीकार नहीं करा? तो आप तो ये कह देते हैं अशोक की लाट तो बहुत पुरानी है, भारत तो 1947 में नया बनने वाला है। हमने अपने अशोक चक्र को झंडे में स्वीकार नहीं किया, हमने सारनाथ के स्तंभ को स्वीकार नहीं किया। तो क्या हमारी जो आजादी जिन्होंने दिलाई, वो हमारे आजादी दिलाने वाले जो हमारे प्रेरणा पुरुष थे, क्या उन्होंने भारत को उसके मूल सभ्यता और सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ा? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पर बैठते हैं उसके ऊपर महाभारत का वाक्य नहीं लिखा हुआ है, ततो जहां पे धर्म है वहां पर विजय होती है? तो क्या उस वाक्य को निकाल देना चाहिए? आप लोग मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गांधी का हिंदू स्वराज क्या है। गांधी जी के जिसने हिंदू स्वराज को पढ़ा, वो भारत की मूल मान्यताओं को, नैतिकताओं को, शिक्षाओं को जानने की बात करता है। पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो तो हर चीज का विरोध करते हैं। पर बहिष्कार उन्होंने आपका या पार्लियामेंट का नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रपति जी के सम्मान में बहिष्कार किया है। राष्ट्रपति जी के सम्मान में थे तो उनके समर्थन में वोट देते हैं, उन्होंने तो कैंडिडेट खड़ा किया था। भूपेन जी, ये अभी जो विपक्ष का एक मेन मुद्दा है वो खास तौर पर आपके मंत्रालय को लेकर के है, नौकरी की बात। आप जीडीपी के फिगर्स दे रहे हैं, पर एनएसएसओ के जो डेटा है उसके हिसाब से जो यूथ है, 33% ऑफ द यूथ इज करेंटली अनएम्प्लॉयड एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। औरतें खास तौर से हमारे लेबर फोर्स के बाहर है। एक इलेक्शन ईयर में क्या आपको लगता है कि नौकरी का मुद्दा आपके लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि सामान्यतः जब लगता है कि कोई किसी नेता को घेरा जाएगा तो उसको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। मैं तो ये मानता हूं और भी कोई कठिन क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। सर, अभी जहां तक मैं नौकरी के बारे में आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.8% डिक्लाइन हुआ है। ये लोएस्ट है 4 ईयर में। और द लेटेस्ट क्वार्टरली सर्वे ऑल्सो शोड दैट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज इन क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 to 48.5% from 48.2% in the last quarter. जहां तक आप वुमेन्स की बात कर रही हैं, women showed greater enthusiasm for work in their LFPR witness greater increase than that of the man in March quarter. और ये जो रिपोर्ट है ये नेट पे भी अवेलेबल है, इसलिए वर्क फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये हमारे डाटा शो कर रहे हैं और इसको सब स्वीकार भी कर रहे हैं। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी ये कहा था कि ईपीएफओ के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़े हैं, तो हम संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में डाटा जो है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लंबे समय से हमारे देश में लगता था कि जो बड़ा रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन उसका कहीं डेटा अवेलेबल नहीं था। पिछले वर्ष से जब से हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पे करना शुरू किया है, आज हमारे पास 29 करोड़ से ज्यादा, लगभग 30 करोड़ के नजदीक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है। और भारत ने जो टेक्नोलॉजी में तरक्की करी है उसके आधार पे हमारा ई श्रम, हमारा एमएसएमई, हमारा स्किल और हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, इसको हमने इंटीग्रेटेड कर दिया और इस अप्रोच के साथ करा है कि मार्केट में जहां पर वर्क की अवेलेबिलिटी है उनको वर्क उपलब्ध कराना, उनका स्किलिंग कराना, एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार कराना, ये किया है। और जहां तक नए भारत के निर्माण की बात है, इस वर्ष का भी बजट देखेंगे तो हम नया स्किल 4.0 लेकर के आए। हम चाहते हैं कि वर्करों की जो स्किलिंग है
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में उनकी स्किलिंग बढ़े, बल्कि हम तो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के साथ मिलकर अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी डिगी सक्षम जैसे प्रोग्राम चलाते हैं, जो वर्करों की विशेष रूप से डिजिटल स्किल को बढ़ाने का काम करते हैं। सर, you're right. Q4 में आपका कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, it's come down to 6.8%. बट इसका जो रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। वो तो दैट इज डेटा, बट द करंट एग्जिस्टिंग डेटा ही होता है, विपक्ष हमारी आलोचना डेटा पे ही करता है। जब डेटा नहीं मिलता है तो फिर वो लोग बिल को फाड़ने लगते हैं। सौभाग्य से सरकार हमारी है, इसलिए वो फाड़ नहीं पा रहे। पर जैसे कि जब इलेक्शन हुआ, कर्नाटका का अभी इलेक्शन जो कांग्रेस ने जीता, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का फिर से बहुत बड़ा मुद्दा था। मोस्ट पीपल बिलीव कि जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता कांग्रेस ने अनाउंस किया है, सिद्धरामैया जी ने, दैट प्लेड अ मेजर रोल इन इंश्योरिंग दैट दे विन। अब वही मॉडल वो राजस्थान में अपनाएंगे, मध्य प्रदेश में अपनाएंगे। जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं उनको 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो रियल आंकड़े कम हुए हैं, पर रियल वर्ल्ड में जो बेरोजगार हैं उनको कांग्रेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है। तो देखिए, डिसअफेक्शन कर्नाटक की हमारी पार्टी की हार हुई है, उनकी विजय हुई है। लोकतंत्र में जिसकी विजय हो वो सरकार बनाएगा, लेकिन कोई एक कारण हो गया हो या ये कारण हो गया हो ऐसा नहीं है। और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, देश के विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे जो डेटा और जो ग्राउंड है दोनों में समानता है, और हमें विश्वास है कि विजय अंत में सत्य की होती है, और काठ की हांडी रोज रोज नहीं चला करते। पर आप एक लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं, स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट की। आपको लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इस तरीके से देना, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में यही कहा था कि जो गारंटी स्कीम्स हैं उनसे लोगों को बच करके रहना चाहिए। दो विषय अलग अलग होते हैं। एक होता है स्कीम के माध्यम से लोगों का एम्पावरमेंट करना, और एक कोई भी घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों का एल्योरमेंट करना। दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। एम्पावरमेंट करके सरकार में आना और सरकार में लोगों को उस एम्पावरमेंट के आधार पर आगे बढ़ाना, ये हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है। लेकिन केवल एल्योरमेंट देना और उस झूठ के प्रलोभन में अपनी सरकार बना लेना, ये लंबी चलने वाली चीज नहीं है, और ये चलेगी भी नहीं। इंक्रीजिंगली आप देख नहीं रहे हैं कि ये एक स्टैंडर्ड मॉडल बन गया है, जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था, अब अक्रॉस द बोर्ड हर कोई पार्टी कर रही है। कौन पार्टी क्या कर रही है, हम ये मानते हैं कि हम लोकतंत्र की लड़ाई को जनता के विश्वास, भरोसे और उनकी सेवा के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। और इसलिए 9 वर्षों की अपनी केंद्र सरकार चलाकर आज जब हमारे 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हम उसका हिसाब देने जा रहे हैं, और जनता इस पे भरोसा करती है। और आप विश्वास रखिए, जिस जनता ने 2014 में हमें भरोसे से चुना था, उसने 2019 में हमें 303 सीटों से जिताया, और आज जब 9 साल में हम हिसाब दे रहे हैं तो उससे ज्यादा सीटों के साथ जिताकर 2024 में हमारी सरकार बनाने वाली है। एक गवर्नमेंट के लिए शायद सबसे कोई मुश्किल चीज होती है, एंड स्पेशली आप, क्योंकि जो मोदी सरकार है उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा मेजर पुश है। भले से ही वो आपका हाईवेज है, पोर्ट्स है, रोड्स है, पर क्या ये सारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं डायरेक्टली आपकी जो मंत्रालय है उसके साथ क्लैश नहीं करता? क्योंकि आपको एक तरफ एनवायरनमेंट का जवाबदेही देनी पड़ती है, आपके खुद के अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं, और दूसरी तरफ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी करना है। और कितनी बार ये एक क्लैश होता है। हमने देखा मुंबई में क्या हुआ, आपकी आरए जो शेड थी उसको लेकर के लोगों में ऑपोजिशन था। हाईवे कंस्ट्रक्शन में फॉरेस्ट को कितना करना है, अभी जो आपका 4 धाम का रोड है उसको लेकर के जब उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ आपके मंत्रालय का कि आप लार्ज स्केल डेवलपमेंट के चलते एनवायरनमेंट को आपने सैक्रिफाइस कर दिया। कैसे इसको आप बैलेंस करेंगे? पहली बात तो देखो, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए आपके फैक्ट को सुधार देता हूं। जोशीमठ और 4 धाम रोड 2 अलग अलग डिस्टेंस की चीजें हैं। प्लीज आप मिला करके मत बोलिए, फैक्ट ठीक नहीं है। दूसरी बात, आप तो दिल्ली में ही रहती हैं, नोएडा की तरफ जाती होंगी। जब हम सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रगति मैदान होते हुए जाते थे
और जितने घंटे का जाम लगता था, 1-2 साल तो हम लोगों को दिक्कत हुई, अंडरपास बन गया। आप टीरी की रिपोर्ट उठा के देखिए कितना कार्बन एमिशन कम हुआ, कितना पॉल्यूशन कम हुआ। ये एक मिथ है। और उसमें जितनी गाड़ियां रुका करती थी, जितना धुआं हुआ करता था, जितना पीक टाइम पे जाम हुआ करता था, और आज जब आप निकलते हैं तो आप कहते हैं कि नोएडा जाने में बहुत सुकून है, पॉल्यूशन भी कम होता है। आप महाराष्ट्र में पैंच में जहां पे हमारा नेशनल पार्क है, हमारा डिजाइन करा हुआ आप हाईवे देखिए कि नीचे सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, और ऊपर डिजाइन से निकल रहा है। आज ही रेलवे के साथ हमने पूरे देश में लगभग 1100 किलोमीटर ऐसी रेलवे लाइन की पहचान करी जहां से हमारे हाथी निकला करते थे। आज ही सुबह मैंने उसका रिव्यू किया, मेरे पास पेपर आया और मैं अभी ट्वीट भी करूंगा कि हमने उनके लिए एक अलग से पैसेजेस की इस तरह से बनाए ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह से निकल जाए, और हमने ऐसे 100 स्थान करे उसका प्रयोग किया। तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ये को एग्जिस्ट करता है। तो दुनिया के बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तो डेवलपमेंट कर ले अपने हाईवे वगैरह, भारत में करे तो सारी लॉबी खड़ी हो जाती है। वहां पे जाके फिर आप आके हमको कहते हो कि देखो वहां पे इतना अच्छा रोड है। और दूसरी बात, आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उठा के देखिए, हमने डेवलपमेंट करने के बाद भी पिछले 2 वर्षों में अपने देश के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है। और आप ये देखिए कि हमने ही पिछले 9 सालों में देश की 75 लेक्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया है। और इस बात को भी आप देखिए कि हम देश में अपने जितने भी फॉरेस्ट के अपने एरियाज हैं उसका प्रबंधन करने में कामयाब हुए, और उसके बाद हमने देश में टाइगर कंजर्वेशन जैसे विषयों को भी आगे बढ़ाया। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हमें दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और अपनी बायोडायवर्सिटी का प्रिजर्वेशन भी चाहिए। वरना अब मैं यहां कहूंगा कि पगडंडी होनी चाहिए, तो पगडंडी होना अमृतकाल का भारत नहीं है। पॉल्यूशन फ्री, कम कार्बन एमिशन वाले और बायोडायवर्सिटी को सेव करते हुए, हमारी वाइल्ड लाइफ को सेव करते हुए सेफ पैसेज और कॉरिडोर बनाना ये देश की आवश्यकता है। और देश के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल दूर बसा हुआ है, उस तक देश की सुविधाओं को पहुंचाना। और इसीलिए 9 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है, लास्ट माइल डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी और टाइम बाउंड डिलीवरी। इसके कारण इस सरकार की विश्वसनीयता चली है, जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों का संतुलन आता है। क्या आपको लगता है कभी कभी स्टेट से समन्वय नहीं बैठ पाने से जो आपका पोल्यूशन के टारगेट्स हैं वो नहीं मीट हो पा रहे? क्योंकि आपने दिल्ली की बात की, क्लासिक एग्जांपल है, हर साल दिवाली के आसपास वही रोना होता है, पराली जलनी शुरू होती है, एक एक्शन प्लान लाया गया, ग्रैप की बात की गई, फिर वही होता है कि पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, फिर वो कहते हैं ये हरियाणा वाले कर रहे हैं, यूपी वाले कर रहे हैं, हमारी गलती, आपकी गलती, भुगतते हैं यहाँ रहने वाले लोग। ये समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है डिस्पाइट हैविंग एन एक्शन प्लान? इस बार केंद्र के साथ हमने पहले से बैठ के करी है। आप रिपोर्ट को उठा के देखिए, पिछली बार पराली जलने के जो इंसिडेंट थे वो 75,000 से ज्यादा थे। इस बार वो घटकर 55,000 हुए, 40% उसमें कमी आई है। पिछली बार जो मेन जो दिन थे वो 53 थे, वो घट के 23 हुए। और आप पिछला भी निकालिए, हम पिछले कई सालों में सबसे अच्छा जो दिल्ली का वातावरण वो मेंटेन कर पाए, और दिल्ली का पॉल्यूशन इस बार बॉम्बे से मच बेटर रहा है और पिछले सालों में सबसे कम रहा है। आप मीडिया के द्वारा इसके बारे में और जागृति करिए। तो आप कह रहे हैं पंजाब सरकार ने कोऑपरेट किया आपके साथ? देखिए, सभी मैं कभी किसी को विकास के क्षेत्र में नहीं करता हूं, लेकिन पंजाब में जो पिछली बार के मुकाबले जो जितना उन्होंने तय किया उतना उन्होंने नहीं किया, वो भी फैक्ट मैंने सबके सामने रखे। हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम किया, और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बनाए, जिस प्रकार से हमने एनसीआर रीजन में इंडस्ट्री को पीएनजी के ऊपर कन्वर्ट किया, गुड़गांव में 73 सोसाइटियों में डीजल चला करता था, उनको हमने रिड्यूस करके 3 के ऊपर लेकर आए, सबके प्रयासों से हुआ है। और मैं ये चाहता हूं, और मैं सब राज्य सरकारों से भी कहना चाहता हूं, मैं सब अधिकारियों से कहता हूं कि भाई ये सबकी लड़ाई है, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो धुआं कहीं नहीं जाता है,
आपके, हमारे और हमारे बच्चों के फेफड़ों में भी जाता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो पिछली बार हमने एक उपलब्धि हासिल करी है, हम उस पैरामीटर को और आगे बढ़ाएंगे। Sir, in this 9 years of your government, another major achievement that was spoken of was Project Cheetah. क्या उसको setback हुआ है? The fact कि 3 adults और 3 शावक उनकी death हो गई है, क्या प्रॉब्लम क्या आई इस इतने ambitious project में, इतने headline project में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट चीता में जो हमारे साइंटिस्ट लग रहे हैं और जो भी हमारे फील्ड ऑफिसर लग रहे हैं, वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, जब ये अपने आप में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें मोर्टेलिटी की आशंका को बताया गया था, वो हमारी रिपोर्ट में भी है। उसमें जब हमारे शावक आए थे, चीते आए थे, तो जो एक चीता जो हमारा आया था, वो जब आया था तभी बीमार था। बाकी जो 2 जिनकी डेथ हुई है उसके रीजन हमने पूरे दिए हैं। वो एक पूरा एक वाइल्ड प्रोसेस में एक सिस्टम रहता है। जो 3 शावकों का विषय था वो 47 डिग्री था और इनकी जो बच्चे होते हैं, इनके बचने की वो कम रहते। 47 डिग्री में वो मदर का ही दूध पीते हैं और 47 डिग्री पे बहुत ज्यादा था उनका एक एटीट्यूड। बाद में उनके लिए एक उसमें बचा भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी मैं परसों रिव्यू भी करके आया हूँ और मैं अपने दिल्ली की ही साइंटिस्ट हैं, देहरादून की हैं, 24-25 साल की, जस्ट उन्होंने एनवायरमेंटल लॉ में, इसमें वाइल्ड लाइफ में उन्होंने डिप्लोमा लेकर वो सुबह शाम खुद जाती हैं। मतलब इतना मेहनत करते हैं हमारी ये यंग साइंटिस्ट, लड़कियां लड़के खूब मेहनत कर रहे हैं और मैं उनके मेहनत और भरोसे के आधार पे कहता हूँ ये प्रोजेक्ट में जो हुआ है उसकी भी हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से मान के चलना, प्रोजेक्ट चीता हमारा इतना सक्सेस होगा कि पूरे देश को उसके ऊपर गर्व होगा। Well, we certainly hope so. In the next 11 months, I think the world will be looking at India. You have a huge responsibility. Thank you very much, Bhupendra Yadav ji. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you, sir, for your thoughts. Thanks, Padmaja, as well. Well, we've seen a significant increase in user adoption and capital investment in digital connectivity in India, Madhav, and the word post the pandemic clearly has been so, right? We've seen since we embarked on a momentous digital transformation, and the possibilities for discovery and innovations are endless. And while this has really helped Indians in terms of accessibility and connectivity, it has also led to a need to create awareness and assist Indians in protecting their privacy and safety online. Absolutely. And the progenitor of the information age, Google, since its inception in 1995, has also led with the exact same mission: to organize the world's information and make it universally accessible and useful. So it's no surprise that after Google has permeated our culture, been used as a noun, a verb, and has become ubiquitous enough in 2003 to have the word Googleization, quote unquote, coined after it. And it is no surprise that we look to the pioneering enterprise to guide us securely into the new age of experience. And as the Vice President, Trust and Safety Google India, he inspires his team to be passionate about user safety and to strive to enable a trusted user experience at Google. In fact, in products, by preventing fraud, abuse, malware, and phishing, to give us a better understanding on establishing a collective standard for internet safety and developing a more nimble approach to the challenges that we face today, please welcome on stage for a special address, Saikat Mitra. I'll be all right. I'll be all right. I'll be all right. I'll be all right.
Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a privilege to be here today. My name is Saikat Mitra, and I'm the Vice President of Trust and Safety at Google India. The video demonstrates how we have reshaped user protection over the years to respond to emerging threat vectors. But we continue to innovate every day so that every day you are safer with Google. Our responsibility for user protection starts with security. And it's a responsibility that we take very, very seriously. We do this with a combination of artificial intelligence and human intelligence. And we do this better than anyone else in the world. As a company that builds amazing products that are used by millions of users in their lives every day, it is of primal importance that we build security in our product from ground up. And we do this with 3 philosophies of product development. Our products are built secure by default. They're private by design, and we put the user, you, in control of your data. Our trust and safety team of over 20,000 people around the world work 24/7 to keep users in India safe. We built advanced protection in every product that you use. We use AI and ML extensively to make our protections automated and preventative so that they intercept threat before they reach you. We also focus on providing alerts to users so that they can ensure users can be safe online. We were the first company to use extensively AI/ML in user protection. And there's some data that gives you an understanding. Every day, Gmail prevents 99.99% of spam emails from reaching users. Every day, Gmail prevents 100 million phishing attempts from reaching users. And that's how we build safe products. But let's focus into India, where we see this playing out more than ever. And as our speakers said before, India is in a fascinating growth journey. Not just the number of internet users that's grown significantly, but also how the users are embracing a digital lifestyle. Today, India has 700 million internet users. And out of them, 100 million came online in the last 2 years. 70% of these users are from rural areas who are accessing internet in a language, English, which is not their preferred language. So while it's great to see how India has adopted the internet and embracing the digital lifestyle, we've also seen an explosion of scams, fraud, phishing, malware, and prevalence in India. And as we think of this, it really underscores the importance of investment in cybersecurity in the country. If you scan the headlines over the last year or so, you'll see that there's been some very severe cybersecurity attacks in the country's infrastructure, mostly in the space of ransomware. However, even beyond secure enterprises, so even if your products are secured, we have seen Indians fall victim to social engineering attempts that really increase scams in the country. And that is why we need to think about how can we make this better. So the solution in this and the path forward actually lies in technology itself. We don't need more security software. We need more software that is secure by itself. Our cybersecurity foundation is based on 3 principles: protect, empower, and advance. We take our first and foremost responsibility to protect users,
businesses, and governments using our technology and our expertise. Our mission in India is to make internet helpful and safer for 1 billion Indians so that India can be the leader in digital economy in the world. But protecting people starts with people. We have a significant gap in trained cybersecurity professionals in the country. We have a significant opportunity for investment in this space. And that is why last year we announced a number of initiatives, including our cybersecurity roadshow, the Google Startup Accelerator program, and we took an ambitious goal of training 1 lakh developers in technologies like encryption, secure coding to make products more stable. And we are marching ahead very, very strongly and stay committed to that goal. But in addition to people, we also use cutting-edge technology in AI and ML to prevent user harm. Here's a few examples. Many of you use Google Pay. Every day, we block 1 lakh transactions that would have been fraudulent. Every day, we send 2 lakh alerts to people trying to transact on GPay, and those 2 lakh alerts are based on our intelligence of our models on machine learning. And guess what? 40% of users actually cancel the transaction. So that actually tells us how much we are able to use our technology to prevent fraud and abuse. Compromised passwords is a huge challenge in the society. We were the first company to make 2-factor authentication a default in our products. And for our users in India, we made it easier by offering that through Assistant in Hindi. Switching on to content safety. As you know, many of our products are content rich. They host a lot of content. We take the responsibility of ensuring safe content for all users very, very seriously. Especially, we want to make sure women and children are safe online. We have 0 tolerance for child sexual abuse imagery. We are the world's leader in detecting child sexual abuse imagery on the internet. And we don't just protect it on our products, but through our content safety APIs, we actually externalize our knowledge and expertise to other businesses so that they can use it and make internet safe for children. Our goal is to remove child sexual abuse content from the internet before anybody gets access to it. You all would remember in the last couple of years, we have heard some really heart-wrenching stories about personal loan and abuse that happened associated with personal loan apps. As soon as we came to know, we swung to action, worked with law enforcement agencies, worked with regulators like the RBI, and we launched our personal loan app policy, and we removed thousands of loan apps from the Google Play Store so that users continue to be protected. But this year, we're taking it one step further. We have launched our financial services certification policy, whereby now in India, anybody who wants to run advertisement on financial services products have to go through an independent verification and certification. And just to put some numbers, in 2022, we removed 5.2 billion ads. We restricted 4.3 billion ads, and we suspended 6.7 million advertiser accounts for failing to comply with our policy. With our recent acquisition of Mandiant, which is the world leader in cybersecurity, we have really bolstered our cybersecurity offerings. In addition, Google also hosts the very coveted TAG, or Threat Analysis Group, which is a group that actually studies nation and state actors around the world and issue the bulletins that are consumed by governments, that are consumed by cybersecurity professionals. Just last year, they have issued over 100 such bulletins and alerts, especially in light of the Russia and Ukraine conflict. Our cybersecurity approach, as I said, is built on foundation of protect, empower, and advance. On empower, we believe, especially for a country like India, it's extremely important to enable and empower civil society
and consumers. So we have taken extensive education attempts. Many of you must have seen our videos on YouTube titled Raho Do Kadam Aage. They have been a big advocate for user safety, and we continue to focus on empowering civil society in keeping them safe online. Then, of course, we are a technology company. We're extremely proud of the investments we make on leading edge technology in today's world that's around generative AI and large language models. And we're extensively using that technology to continue to advance our cybersecurity protections. But we can't do this alone. Internet is a large multi-stakeholder ecosystem. And we can only do that in partnership. And we can only do that in partnership with all of you, which is government, industries, and civil society. Safety online is also not a one and done thing. It is a day in, day out run against the bad actors who are trying to find every single gap hole in internet's guardrails. And we continue to be committed in that journey. As we say, safety is not a compliance checkbox. It is the way we do things. Our mission continues to be about building a safer internet for everyone. It is not one more thing to do. It is the only thing to do together. Thank you for being an amazing audience, and continue staying safer with Google every day. Thank you so much, Mr. Mitra. Ladies and gentlemen, please share your thoughts and suggestions with us on social media platforms using the hashtag IC2023. Go ahead and tag us in your selfies and videos. We would love to hear from you. And on that note, we break for a quick lunch, but do join us back for more thought-provoking sessions at the 9th edition of the IDFC First Bank Presents Times Network India Economic Conclave, powered by Google. Presenting partner, IDFC First Bank, powered by Google. Associate partner, Herbalife. State partner, Government of Chhattisgarh. NGO partner, Gravitas Foundation. Energy partner, IOCL. State partner, Government of Uttar Pradesh. State partner, Government of Uttarakhand. Knowledge partner, Amrita Vishwa Vidyapeetham. Associate partner, Ekam. Energy partner, REC Rural. Electrification Corporation Limited. Associate partner, Dream Sports. Associate partner, Adani. Planet partner, Pernod Ricard India. And education partner, Bennett University. Well, ladies and gentlemen, do join us after lunch because we're going to be showcasing a great lineup and dialogues with leaders and eminent guests such as Mark Mobius, Sri Vivek Kumar, Devangan. We'll have Mr. Jyotiraditya Scindia, General Manoj Pandey, Sri Piyush Goyal, and of course, none other than Ricky Cage's performance right after lunch. So please be back soon. A fireside chat on building India's highway to the future. नमस्कार गडकरी जी, आपको तो बहुत से खिताब मिले हैं, द हाईवे मैन, द एंटरप्रेन्योर, मिनिस्टर. आपकी सोच ऐसी है कि बिजनेस और इकोनॉमी आगे कैसे बढ़े. 9 साल जो मोदी सरकार के रहे हैं, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो शायद रोड और हाईवेज के सेक्टर में है. 54,000 kilometers of roads, and the average building of roads has gone up from 12 kilometers per day to about 28.5 kilometers per day. Nitin Gadkari ji, huge round of applause for the minister. नितिन गडकरी जी, everybody wants to know कि सीक्रेट क्या है इस सक्सेस का. कौन सी चाबी लगाई है आपने कि ये काम जो पहले धीरे चल रहा था वो अब तेज हो रहा है? सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपके बात को सुधारता हूं. इंडस्ट्री और बिजनेस बढ़ाना ये तो देश के लिए अच्छी बात है, पर मैं ये मानता हूं कि इंडस्ट्री और बिजनेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने वाले जो इन्वेस्टर हैं, they are not only wealth creator, they are employment creator. और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी. अगर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अगर करनी है,
सही में हमको ये सपना पूरा करना है तो हमें स्वाभाविक रूप से रोजगार निर्माण करना होगा, और रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप करना होगा। जब हम 3 चीजें डेवलप करेंगे तो हमको 4 चीजें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दैट ये नहीं होगा। और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड, बिजनेस डेवलप नहीं होगा तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। और मैं केवल एक छोटी सी बात आपको मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बता रहा हूं जो आपको आगे की विजन में बहुत मजबूत करेगी, कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये टोटल साइज है इंडस्ट्री का 7,50,000 करोड़। इसमें से 3 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, और अभी हमने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। ये जो इंडस्ट्री है इसने देश में 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए अभी तक, और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी दिया है। अभी हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे थे, पर अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3rd नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर हम हैं, और 4थे नंबर पर अब जापान चला गया। ये जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं विश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे, और जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होगा। जो बात आपने हाईवे के बारे में बताई, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ। बहुत लोगों को एक परसेप्शन है कि मैं इंजीनियर हूँ। अभी फिलहाल मुझे 6 डिलीट मिली, तो मैं 75 में एसएससी में था, तो इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में मैं बाहर निकल गया, तो मुझे 52% ही मार्क मिले हैं, और साइंस में 49.26% मिले। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। तो अब मुझे कभी कभी 6 डिलीट मिलने के बाद भी डॉक्टरेट लगाने के बारे में बहुत संकोच होता है, तो मैं कोई इतना होशियार नहीं हूँ। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय एक बार मीडिया में कही थी, कि मुझे धीरूभाई अंबानी जी का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर उस समय मैंने रिजेक्ट किया था, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय 3600 करोड़ का था 96 में। तो स्वाभाविक रूप से ये कैसा होगा, तो मैं पुणे में गया था, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप ये रोड कितने साल में पूरा करोगे? मैंने कहा 2 साल में। तो आपको पैसे कितने लगेंगे? तो मैंने कहा 1600 करोड़ 1800 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो पूरी मीडिया लोग हंसने लगे, और एक ने पूछा कि आप कुछ भी बोलोगे और हमने लिखना चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? नहीं। तो कौन सी बात है कि आप बोल रहे ये होगा? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, और वो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा उनको कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। So my strong political will, fast track decision making process, 100% corruption free system and commitment for the quality. कुछ बातें जो है वो और कुछ जो है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर से जब डील करता हूं तो अच्छा काम करता हूं तो पब्लिकली तारीफ करता हूं, और काम गलत होता है तो उसकी धुलाई करने में भी कोई संकोच नहीं करता है। लेकिन नितिन गडकरी जी, यू आर कॉल्ड द मोस्ट फ्रैंक मिनिस्टर, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप बता नहीं सकते आज ऑडियंस को? मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेकिंग न्यूज बने। सर, आप हमारी पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? हमारा ब्रेकिंग न्यूज का धंधा है। देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूं
कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है, मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था, वो और मेरे एमडी, हम मुंबई खंडाला लोनावाला रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। हमारा जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, वो एक्सपेंशन जॉइंट्स, मुझे याद है मैं 95-2000 में मंत्री था मुंबई में। अगर आपको मौका मिला, आप मुंबई से ज्यादा हो, ये जो जे हॉस्पिटल से लेकर VT तक फ्लाईओवर बना है, एक श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है, अभी शायद नहीं है वो हांगकांग से मैंने उनको लाया। उसके एक्सपेंशन जॉइंट देखो, कभी आपको पेट पे पानी नहीं था, बेस्ट है, गैमन ने बनाया था ब्रिज वो। अभी हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स, तो मैंने देखा ये कहां से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब मेरे ध्यान में आया कि सहारनपुर में ये कोई हथौड़ा टेक्निक से कोई बना के लगाते हैं। फिर मैंने जहां जा गया तो मैंने बोला देखो एक्सपेंशन जॉइंट्स खराब निकले तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की धुलाई करूंगा। अब वो धीरे धीरे होके अब क्वालिटी सुधर गई। पहली बात यह है कि क्वालिटी के बारे में दो चीजें आवश्यक है। वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरी बात, वैसे भी मुझे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत प्रेम है तो मैं 1/3 यूज को कम करना चाहता हूं। और तीसरी बात, हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आसाम के बांबू को लाकर क्रैश बैरियर बनाया और वो ऑल टेस्ट पास करके अब सक्सेसफुल हुआ और देश में हम उसको लगा रहे हैं। हमने 50,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। 3.5 करोड़ ट्रीज हमने 3 मीटर के ऊपर की प्लांट की है। और अभी परली जो होती है, राइस स्ट्रॉ, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण है, तो हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। अब हमने तय किया है 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 30 लाख टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने तय किया कि अब ये बिटुमिन सक्सेसफुल हो गया हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, और ICCR ने प्रूव करके टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया कि बिटुमिन से राइस स्ट्रॉ, परली से हम बिटुमिन बनाएंगे। तो अब मैं 30 लाख टन बिटुमिन हमारे किसान बनाए, इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। हमने दिल्ली में 3 कचरे की टेकड़ी है, अभी उसको हमने डाउन कर दिया। 20 लाख टन कचरा ये UER2 रोड में हमने डाला और अहमदाबाद डोलेरो रोड में 20 लाख टन डाला। और अभी हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि हम कचरे को रोड के अंदर डालें। हम 7% प्लास्टिक बिटुमेन में डाल रहे हैं और जो रबर टायर होते हैं उसको इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। वेस्ट जो सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात होती है वो बहुत बड़ी है, इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ। तो मैंने भूपेंद्र जी को कहा कि इसको परमिशन दो, और आज हम वो रबराइज पाउडर बिटुमेन में डालकर रोड की क्वालिटी भी सुधर रही है और कॉस्ट भी कम हो रही है। तो हमने अभी बहुत सी बातें ऐसे कर रहे हैं हम लोग, जिसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल पर भी मेरी मिनिस्ट्री बहुत, आज मैं हाइड्रोजन कार में आया हूँ यहाँ। बिल्कुल, आज आपने स्टेटमेंट दिया है, हाइड्रोजन कार में आप आए हैं, बायोफ्यूल्स पे बहुत काम किया है आपके मंत्रालय ने। इकोलॉजिकली यू आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस। साइड प्रोडक्ट केजरीवाल जी की भी हेल्प कर रहे हैं, सारे कचरे के ढेर कम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियर बताता हूं, मैं किसी की हेल्प नहीं करता और किसी की विरोध नहीं करता। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज माय बिजनेस, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं मानता हूं ये देश सबका है। प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो देश के लिए आवश्यक काम है वो कोई भी गवर्नमेंट का हो, मैं उन नसीबवान लोगों में से हूं कि माय आइडेंटिटी, मेरी आइडियोलॉजी बहुत ओपन है, एंड माय आइडियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। पर मैं पार्लियामेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में जब चर्चा हुई तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 75 लोग बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी।
सबने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया। तो मैंने उनको कहा कि जो सही काम है वो सबका होगा और गलत काम अपने का भी नहीं होगा। तो जो काम होता है, कोई वो कचरा उठाना, ये कोई केजरीवाल को मदद करना या ये बात नहीं है। दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करना हमारा मिशन है। मैं 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहा हूं और इस साल एंड में मेरे 90% काम पूरे होंगे। और ये 65,000 करोड़ है ना, वो जैसे हवा वाली बात नहीं है, ये लिस्ट है मेरे पास प्रोजेक्ट की और डेट है कौन से तारीख को कौन सा पूरा होगा। और दिल्ली ये वर्ल्ड का पोल्यूटेड सिटी है और दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने का एक प्रोग्राम हमने तैयार किया है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि ट्रैफिक जाम कैसे होता है पूरा, उसका स्टडी किया। और दिल्ली को अब ब्यूटीफाई भी करना है और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाकर, ये जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति देकर दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, ये कार्यक्रम किया। और ये महानगर पालिका भी सहयोग मिलती है, डीडीए का भी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का। 6,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो यमुना में दूषित पानी को सुधारने के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए, जायका का बड़ा प्रोजेक्ट दिया। तो ये कभी हमारी सरकार में हमने इस प्रकार से राज्य सरकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। Mr. Nitin Gadkari, you have many achievements to your credit, whether it is building 100 kilometers of roads in 100 hours, whether it is taking up the average road building speed from 12 kilometers to 28.6. But has it been good going all through, or have there been problems on the way and structural problems that you still feel need to be addressed and that need a little bit of further push? देखिए, 2-3 दिन पहले मैं NHI में गया था और हमारे आरओ पीडी करीब 400-500 लोगों की 2 दिन वर्कशॉप हुई। मैं उस दिन दिन भर था। स्वाभाविक रूप से एक बार NHI की बिल्डिंग बनी तो वो 1.5 साल के बजाय 4.5 साल में बनी और मेरा भाषण था इनॉग्रेशन का और मैंने खूब भाषण में धुलाई की। मुझे भी पता नहीं कि मैंने बोला, मैं और ऐसे लाइट मूड में मैंने कहा कि मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं क्यों करूं। आप 1.5 साल का काम 4.5 साल में किया, 150 करोड़ का काम 460 करोड़ में लेके गए। तो मेरा भाषण इतना वायरल हुआ कि मुझे यूट्यूब से वैसे हर महीना बहुत पैसा मिलता है तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत जगह पर पहुंचा है। प्रॉब्लम यह है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। मैं अभी भी समाधानी नहीं हूं पूरी तरह से। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो सिस्टम में है। एक चीज आपको कभी इसको आप सोच के आगे बढ़ा सके तो जरूर करिए। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इस बार पहली बार मैंने पीडी और आरओ को परफॉर्मेंस ऑडिट का सेक्रेटरी को देकर एक चार्ट दिया है कि आपने एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस का क्लियरेंस कैसे किया, लैंड एक्विजिशन कैसे की, कितना काम अवार्ड किया, कितने ब्लैक स्पॉट आपने इंप्रूव किए, आपके एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। ऐसे 25 विषय निकाले और मैंने उनको कहा कि इस 25 सब्जेक्ट के ऊपर आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा होगा वो चेक करेंगे, बाद में आपको प्रमोशन देंगे। सीआर में वो लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हम सबको आपको दे देंगे अच्छा, ऐसा नहीं होगा। समवेयर अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए और जो काम नहीं कर रहे उनको कहीं ना कहीं सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, बट इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड सैक देम। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, कंपटीशन होती है। अब हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7, और ये मैंने थोड़ी किए। दैट क्रेडिट इज नॉट नितिन गडकरीज क्रेडिट, द क्रेडिट गोइंग टू द टीम। और मैं उनको अच्छी बात मैंने समझाई कि वो बहुत ही मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया। द टोटल वर्क इज A² + B²। But when A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, उसका जवाब आता है A² + B² + twice AB, and twice AB is a result of collective team spirit. And collective team spirit में मैं अक्सर याद रखता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप
is the biggest strength of politics, business, and administration. My relationship with my subordinate people is equally important. और मुझे लगता है कि हमारे लोग रात दिन काम करते हैं. तो आज इस समय क्या हुआ कि जो सक्सेस स्टोरी थी, जो रोड बहुत अच्छे तरह कम समय में हुआ, जिसको बोनस मिला, उसका प्रेजेंटेशन हुआ. और जो 5 साल से चल रहा है, किन किन लोगों ने, जो भी इन्होंने कहा ना, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी, तो वैसे ही मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट के विलन कौन कौन है, किसने रोका, निकालो उनके नाम लो. और फिर उसकी केस स्टडी हुई. और केस स्टडी होने के बाद ये पता चला कि हम ये मिस्टेक रिपीट ना करें. मिस्टेक एक बार हो सकती है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक ही मिस्टेक 10 बार करने का अधिकार नहीं है. तो धीरे धीरे वर्क कल्चर बदलता है और बहुत और लोग ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी रात दिन काम करते हैं. और कलेक्टिव टीम स्पिरिट के कारण ही जो कुछ है वो मिलता है. मंत्री करके मुझे ज्यादा क्रेडिट मिलता है. नितिन गडकरी जी, even though you had 49.26% in SSC, आपकी अलजेब्रा तो बहुत अच्छी है. लेकिन 400 प्रोजेक्ट्स अभी भी किसी ना किसी लॉक जैम में फंसे हैं. इनको निकालने के लिए आगे क्या प्लान? देखिए, ये सच्चाई नहीं है. ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट होता है वो छोटे से काम के कारण भी नहीं मिलता. जैसे एक छोटे से 100 किलोमीटर के रोड पर 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता तो प्रोजेक्ट बंद रहता है. वो हम लोग क्लियरेंस के पीछे लगते हैं, जब मिलेगा तब उसको फिर करते हैं, तब तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है. कई लैंड एक्विजिशन की केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो स्टे देते तो वो लटक जाता है. तो इसलिए ये 400 में से सीरियस जो है वो 30-40 प्रोजेक्ट है. पर आपको मैं बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना, ऐसे हमारे IDBI बैंक वाले, इनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट थे, तो उस समय 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे. 3 लाख करोड़ का लगभग NPA हो गया था. और मेरे डिपार्टमेंट में, और हमने लगातार रात को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक बैठकर बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी बैठकर हम बैठते थे. एक सेक्शन ही था. और मैं आपको ये विश्वास के साथ बताता हूं कि हमने 3 लाख करोड़ के NPA से भारतीय बैंकों को बचाया. और मैंने अभी बैंकों को भी कहा कि तुम परफॉर्मेंस गारंटी देना है. ये 1-1 साल 6-6 महीने देते नहीं. तो मैंने अभी इनका बिजनेस खराब किया. मैंने कहा हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए और अभी हमने उसको लॉन्च किया. अब 3-4 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ की बैंक गारंटी हमारे आती रहती है, जाती रहती है. अब इंश्योरेंस बॉन्ड आ गया, इनका बिजनेस चला गया, अब तुरंत होगा. तो जितना रिफॉर्म करना है सिस्टम में, जगह जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं लेना, जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना. अभी मशीनरी जो है वो डीजल पे चलती है. अब मेरा एक प्रयास है, कठिन है वो, कि अभी मशीनरी को हाइड्रोजन पर और उसके साथ साथ LNG पर और इलेक्ट्रिक पर कैसे लाए, इलेक्ट्रिक ट्रक का कैसे उपयोग हो. तो मैं सोच रहा हूं कि हम ऐसी पॉलिसी करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल को छोड़कर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेंगे, उनको हम कुछ इंटरेस्ट कम करके कुछ लोन देंगे. अभी ये जो सेग्रीगेट करना है कचरा, इसके लिए एक मशीन लगती है, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक सेग्रीगेट होता है, वो वेस्ट फिर हम लोग रोड में डालते हैं. तो मैंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, वो मशीन कचरे पे लगाएगा और पूरे कचरे से हमारी जो हम एग्रीगेट दूर से ला रहे हैं उसमें हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करो, उससे लाने से ही हमको पुराएगा. और वो अपना काम कचरा खत्म करके डाल के बाद में मशीन बेच देगा या जो करना है वो करेगा. तो वायबल है. धीरे धीरे ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव है कि जिससे हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा करें और कॉस्ट को भी कम करें. तो ये भी कोशिश हमारी चल रही है. नितिन गडकरी जी, काम जितना भी हो, मिनिस्ट्री जितनी भी चलानी हो, अल्टीमेटली तो जिंदगी पॉलिटिक्स पे चलती है. आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज को क्यों कन्विंस नहीं कर पाते? इस तरफ जो ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस का रिलेशनशिप है वो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल है. राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप लोग सिर्फ सेंगोल को प्राथमिकता देते हैं, पार्लियामेंट में लाते हैं, लाइंग डाउन एंड ऑल दैट करते हैं, लेकिन द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर प्राइस राइज,
bad education, unemployment. How do you respond to Mr. Rahul Gandhi? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि जो पॉलिटिक्स मैं करता हूँ, और मैं आपको कहूंगा कि कभी आप इस बात को मानने होता है तो इसको जरूर प्रोपोगेट करिए। पॉलिटिक्स जो है वो पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। वी नीड टू हैव नाउ न्यू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब, राजकारण का मतलब समाजकारण, राष्ट्रकारण और विकास कारण। राजनीति का मतलब लोकनीति, बृहत्तर राजनीति या धर्मनीति। मैं 80% सोशल वर्क करता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में काम करता हूं, बायोफ्यूल में काम करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार देने में सेवा करना इज ए ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे आपसे भी शिकायत है, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस से पावर पॉलिटिक्स को देते हैं। ये बहुत ज्यादा चलता है, इसने क्या क्या, उसने क्या कहा। अब लोगों में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोग नए इनोवेशंस, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, किए हुए अच्छे काम ये देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। तो ये जो कुछ चलता है, ये जो बेंच होते हैं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो वो बेंच में आदमी बैठने के बाद वैसे ही बोलता है उसका कारण, अपोजिशन वाला अगर थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो आप तुरंत हेडलाइन दे देते हो, अपोजिशन वाले ठंडे पड़ गए। वो बोलता है ऐसा लिखा है क्या, और गर्म होके बोलता है फिर। अच्छा, तो ये हमारी गलती है कि राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं? देखो, अपोजिशन पार्टी में उनको ये बोलना ही है। मुझे बताइए कि 75 साल में जो कांग्रेस को इतने साल मिले, उन्होंने एजुकेशन से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब बातों का आप एक बार कंपैरिजन करिए। जो इस 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया, उसकी तुलना करें तो कई गुना हमने ज्यादा काम किया है। ये उनको भी मान्य है, जब अनऑफिशियली बोलते तो अच्छा काम हुआ है करके मान्य करते हैं। पर एक बात, 100% सेटिस्फैक्शन और 100% काम हुआ ऐसा कभी नहीं होता। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिलती है उसको कार चाहिए, कार चाहिए उसको मर्सिडीज चाहिए, और मर्सिडीज है वो हवाई जहाज खरीदना चाहता है, और जो 4 हवाई जहाज खरीदता है वो भी दुखी होता है तो ये कभी ना कभी ऐसा है कि समाधान मानने पर होता है। पर एक बात जरूर है कि जो आपके इकोनॉमिक ये जो डिस्कशन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में हमारी 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52 to 54% सर्विस सेक्टर से आता है, और 12% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। हमारी 65% पॉपुलेशन रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इंडिया के साथ डिपेंड करती है। जो बात उन्होंने कही, जल, जमीन, जंगल और जानवर, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि किसान अन्नदाता नहीं, अब ऊर्जादाता बना। आपको याद होगा 2004 से मैं इथेनॉल मैंने स्टार्ट करके चिल्ला रहा था, आज वो 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गई। अब हाइड्रोजन कचरे से बनेगा, गंदे पानी से बनेगा, और किसान अब डांबर से, बायोमास से बिटुमिन बनाएगा, और बांबू को काट करके व्हाइट कोल बनेगा। रूरल एग्रीकल्चर की इकोनॉमी बदल जाएगी। जिस दिन हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22% पे नहीं लेके जाएंगे, तब तक हमारा देश दुनिया में आगे नहीं जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स और करीब 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया। अमिताभ कांत जी बैठे नीति आयोग में, जब ये थे तो नीति आयोग ने ये आइडेंटिफाई किया, और मैं ये इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में आपको आग्रह से एक ही प्रार्थना करूंगा कि ये जो 65% पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान यानी मुंबई और दिल्ली नहीं है। हिंदुस्तान यानी गांव में बसे हुए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जो 65% आबादी है, उनके सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम हमारी सरकार कर रही है, वही मुझे लगता है कि उसी की गति और मिलेगी, और उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बन पाएगी। और उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और काफी हमारी योजना जो है वो रूरल सेंट्रिक, एग्रीकल्चर सेंट्रिक। अभी एक ही बात बताता हूं आपको, टूरिज्म। अब मैं देहरादून गया था, अब मैं देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में,
और चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, अब मैं जा रहा हूँ 15 दिन के बाद उद्घाटन के लिए तीरथपुर से, वो 3-3.5 घंटे में। यानी आप दिल्ली से मनाली आप 5.5-6 घंटे में आओगे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। तो नेचुरली क्या हुआ इसका फायदा जो मेरे ध्यान में आया कि छोटा जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास था, वो मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ, वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और टूरिज्म पे जा रहे हैं। केवल रोड अच्छा बनने से उत्तराखंड का टूरिज्म दुगना हुआ। अब टूरिज्म दुगना हुआ तो होटल, रेस्टोरेंट्स, मोटेल्स, कार, टैक्सीज, बसेस, सबके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि टूरिज्म में 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। तो अब हम जो काम कर रहे हैं, अब रोड, मैं बात ही नहीं करता ज्यादा रोड की, अब रोड बनाने के बाद इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए टूरिज्म, लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अभी हमने 1,30,000 करोड़ की हम 260 रोपवे, केबल कार, पैनाकुलर रेलवे बना रहे हैं। अभी मैं होटल के सामने से गुड़गांव तक, वो मैं हवा में चलने वाली स्काई बस के प्रोजेक्ट का स्टडी कर रहा हूँ कि हवा में लोग जाएंगे बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में ऊपर के ऊपर। तो दिस टाइप ऑफ न्यू इनोवेशंस, ये और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों के विकास से हम विकास कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। 2024 हम जीतने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है, रास्ता कठिन नहीं है, वो जो जॉइंट की आप बात कर रहे थे, कोई बम्प नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर इस फिलॉसफी पे विश्वास रखता हूँ कि जो ज्यादा भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे टीचर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते थे। मेरी बैटिंग अच्छी थी पर मैं बहुत जल्दी, जैसे आई लाइक, उस समय में श्रीकांत हो, कृष्णमाचारी श्रीकांत एक प्लेयर थे, वो जब वेस्ट इंडीज वगैरह बहुत ऐसी बैटिंग करता था, फिर मैं, फारूक इंजीनियर मुझे लंदन में मिले, अब बहुत बूढ़े हो गए, वो क्रॉस बैट से भी खेलते थे। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि रन निकलने चाहिए, और रन निकालते समय बैट्समैन ने सोचना नहीं चाहिए कि मैं कितने समय क्रीज पर हूं, बॉल आया कि मारो छक्का, आगे चलते रहो। वही स्पीड है, आगे आगे देखो होता है क्या, चिंता मत करो। भविष्य की जो चिंता करते हैं वो दुखी होते हैं। हमने अच्छा काम किया है, अच्छे ही परिणाम आएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 24 में देश के विकास के लिए जनता हमको ही चुनकर देगी, ये मेरा विश्वास है। Well, he's hit it out of the park. That's a sixer. Nitin Gadkari, ladies and gentlemen, put your hands together. Thank you very much, Mr. Nitin Gadkari. Thank you so much, Navika and Honorable Minister, for your insights. Ladies and gentlemen, I would now like to introduce my co-host for the next sessions, National Editor, Times Now, Madhav Das. A fireside chat on building India's highway to the future. नमस्कार गडकरी जी, आपको तो बहुत से खिताब मिले हैं, द हाईवे मैन, द एंटरप्रेन्योर, मिनिस्टर। आपकी सोच ऐसी है कि बिजनेस और इकोनॉमी आगे कैसे बढ़े। 9 साल जो मोदी सरकार के रहे हैं, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो शायद रोड और हाईवेज के सेक्टर में है। 54,000 kilometers of roads, and the average building of roads has gone up from 12 kilometers per day to about 28.5 kilometers per day. Nitin Gadkari ji, huge round of applause for the minister. नितिन गडकरी जी, everybody wants to know कि सीक्रेट क्या है इस सक्सेस का, कौन सी चाबी लगाई है आपने कि ये काम जो पहले धीरे चल रहा था वो अब तेज हो रहा है? सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपके बात को सुधारता हूं। इंडस्ट्री और बिजनेस बढ़ाना ये तो देश के लिए अच्छी बात है, पर मैं ये मानता हूं कि इंडस्ट्री और बिजनेस, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने वाले जो इन्वेस्टर हैं, they are not only wealth creator, they are employment creator. और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी। अगर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अगर करनी है, सही में हमको ये सपना पूरा करना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से रोजगार निर्माण करना होगा, और रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप करना होगा।
जब हम 3 चीजें डेवलप करेंगे तो हमको 4 चीजें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दैट ये नहीं होगा। और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी, तब तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड, बिजनेस डेवलप नहीं होगा, तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा। और रोजगार जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। और मैं केवल एक छोटी सी बात आपको मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बता रहा हूं, जो आपको आगे की विजन में बहुत मजबूत करेगी, कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये टोटल साइज है इंडस्ट्री का 7,50,000 करोड़। इसमें से 3 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और अभी हमने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। ये जो इंडस्ट्री है, इसने देश में 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए अभी तक। और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी दिया है। अभी हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे थे, पर अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3rd नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर हम हैं, और 4थे नंबर पर अब जापान चला गया। ये जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं विश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। और जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रधानमंत्री का जो सपना है, वो पूरा होगा। जो बात आपने हाईवे के बारे में बताई, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ। बहुत लोगों को एक परसेप्शन है कि मैं इंजीनियर हूँ। अभी फिलहाल मुझे 6 डिलीट मिली। तो मैं 75 में एसएससी में था, तो इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में मैं बाहर निकल गया। तो मुझे 52% ही मार्क मिले हैं और साइंस में 49.26% मिले। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। तो अब मुझे कभी कभी 6 डिलीट मिलने के बाद भी डॉक्टरेट लगाने के बारे में बहुत संकोच होता है। तो मैं कोई इतना होशियार नहीं हूँ। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय एक बार मीडिया में कही थी, कि मुझे धीरूभाई अंबानी जी का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर उस समय मैंने रिजेक्ट किया था। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय 3600 करोड़ का था 96 में। तो स्वाभाविक रूप से ये कैसा होगा, तो मैं पुणे में गया था। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप ये रोड कितने साल में पूरा करोगे? मैंने कहा 2 साल में। तो आपको पैसे कितने लगेंगे? तो मैंने कहा 1600 करोड़ 1800 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो पूरी मीडिया लोग, और एक ने पूछा कि आप कुछ भी बोलोगे और हमने लिखना चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? नहीं। तो कौन सी बात है कि आप बोल रहे ये होगा? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया और वो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा, ये कहा उनको कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो माई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, fast track decision making process, 100% corruption free system and commitment for the quality। कुछ बातें जो है वो, और कुछ जो है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर से जब डील करता हूं तो अच्छा काम करता हूं तो पब्लिकली तारीफ करता हूं, और काम गलत होता है तो उसकी धुलाई करने में भी कोई संकोच नहीं करता है। लेकिन नितिन गडकरी जी, यू आर कॉल्ड द मोस्ट फ्रैंक मिनिस्टर। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप बता नहीं सकते आज ऑडियंस को? मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेकिंग न्यूज बने। सर, आप हमारी पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? हमारा ब्रेकिंग न्यूज का धंधा है। देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूं कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है। मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर
हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था, वो और मेरे एमडी, हम मुंबई खंडाला लोनावाला रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। हमारे जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, वो एक्सपेंशन जॉइंट्स, मुझे याद है मैं 95-2000 में मंत्री था मुंबई में, अगर आपको मौका मिला आप मुंबई से ज्यादा हो, ये जो जे हॉस्पिटल से लेकर VT तक फ्लाईओवर बना है, एक श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है, अभी शायद नहीं है वो हांगकांग से मैंने उनको लाया था। उसके एक्सपेंशन जॉइंट देखो, कभी आपको पेट पे पानी नहीं था, बेस्ट है, गैमन ने बनाया था ब्रिज वो। अभी हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स, तो मैंने देखा ये कहां से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब मेरे ध्यान में आया कि सहारनपुर में ये कोई हथौड़ा टेक्निक से कोई बना के लगाते हैं। फिर मैंने जहां जा गया तो मैंने बोला देखो एक्सपेंशन जॉइंट्स खराब निकले तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की धुलाई करूंगा। अब वो धीरे धीरे होके अब क्वालिटी सुधर गई। पहली बात यह है कि क्वालिटी के बारे में दो चीजें आवश्यक है। We need to reduce the cost of construction without compromise with the quality of construction. दूसरी बात, वैसे भी मुझे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत प्रेम है तो मैं 1/3 यूज को कम करना चाहता हूं। और तीसरी बात, हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आसाम के बांबू को लाकर क्रैश बैरियर बनाया और वो ऑल टेस्ट पास करके अब सक्सेसफुल हुआ और देश में हम उसको लगा रहे हैं। हमने 50,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। 3.5 करोड़ ट्रीज हमने 3 मीटर के ऊपर की प्लांट की है। और अभी परली जो होती है, राइस स्ट्रॉ, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण है, तो हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। अब हमने तय किया है 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 30 लाख टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने तय किया है कि अब ये बिटुमिन सक्सेसफुल हो गया हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, और ICCR ने प्रूव करके टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया कि बिटुमिन से राइस स्ट्रॉ, परली से हम बिटुमिन बनाएंगे। तो अब मैं 30 लाख टन बिटुमिन हमारे किसान बनाए, इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। हमने दिल्ली में 3 कचरे की टेकड़ी है, अभी उसको हमने डाउन कर दिया। 20 लाख टन कचरा ये UER2 रोड में हमने डाला और अहमदाबाद डोलेरो रोड में 20 लाख टन डाला। और अभी हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि हम कचरे को रोड के अंदर डालें। हम 7% प्लास्टिक बिटुमेन में डाल रहे हैं और जो रबर टायर होते हैं उसको इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। वेस्ट जो सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात हो रही है वो बहुत बड़ी है। इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ। तो अब मैंने भूपेंद्र जी को कहा कि इसको परमिशन दो और आज हम वो रबराइज पाउडर बिटुमेन में डालकर रोड की क्वालिटी भी सुधर रही है और कॉस्ट भी कम हो रही है। तो हमने अभी बहुत सी बातें ऐसे कर रहे हैं हम लोग जिसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल पर भी मेरी मिनिस्ट्री बहुत, आज मैं हाइड्रोजन कार में आया हूँ यहाँ। बिल्कुल, आज आपने स्टेटमेंट दिया है, हाइड्रोजन कार में आप आए हैं, बायोफ्यूल्स पे बहुत काम किया है आपके मंत्रालय ने। इकोलॉजिकली यू आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस। साइड प्रोडक्ट केजरीवाल जी की भी हेल्प कर रहे हैं, सारे कचरे के ढेर कम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियर बताता हूं, मैं किसी की हेल्प नहीं करता और किसी की विरोध नहीं करता। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज माय बिजनेस, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं मानता हूं ये देश सबका है। प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो देश के लिए आवश्यक काम है वो कोई भी गवर्नमेंट का हो, मैं उन नसीबवान लोगों में से हूं कि माय आइडेंटिटी, मेरी आइडियोलॉजी बहुत ओपन है एंड माय आइडियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। पर मैं पार्लियामेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में जब चर्चा हुई तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 75 लोग बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। सबने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया। तो मैंने उनको कहा कि जो सही काम है वो सबका होगा और गलत काम अपने का भी नहीं होगा।
तो जो काम होता है, कोई वो कचरा उठाना, ये कोई केजरीवाल को मदद करना या ये बात नहीं है। दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करना हमारा मिशन है। मैं 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहा हूं और इस साल एंड में मेरे 90% काम पूरे होंगे। और ये 65,000 करोड़ है ना, वो जैसे हवा वाली बात नहीं है, ये लिस्ट है मेरे पास प्रोजेक्ट की और डेट है कौन से तारीख को कौन सा पूरा होगा। और दिल्ली ये वर्ल्ड का पोल्यूटेड सिटी है और दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने का एक प्रोग्राम हमने तैयार किया है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि ट्रैफिक जाम कैसे होता है पूरा, उसका स्टडी किया। और दिल्ली को अब ब्यूटीफाई भी करना है और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाकर, ये जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति देकर दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, ये कार्यक्रम किया। और ये महानगर पालिका भी सहयोग मिलती है, डीडीए का भी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का। 6,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो यमुना में दूषित पानी को सुधारने के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए, जायका का बड़ा प्रोजेक्ट दिया। तो ये कभी हमारी सरकार में हमने इस प्रकार से राज्य सरकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। Mr. Nitin Gadkari, you have many achievements to your credit. Whether it is building 100 kilometers of roads in 100 hours, whether it is taking up the average road building speed from 12 kilometers to 28.6. But has it been good going all through, or have there been problems on the way and structural problems that you still feel need to be addressed and that need a little bit of further push? देखिए, 2-3 दिन पहले मैं NHI में गया था और हमारे आरओ पीडी करीब 400-500 लोगों की 2 दिन वर्कशॉप हुई। मैं उस दिन भर था। स्वाभाविक रूप से एक बार NHI की बिल्डिंग बनी तो वो 1.5 साल के बजाय 4.5 साल में बनी और मेरा भाषण था इनॉग्रेशन का और मैंने खूब भाषण में धुलाई की। मुझे भी पता नहीं कि मैंने बोला और ऐसे लाइट मूड में मैंने कहा कि मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं क्यों करूं। आप 1.5 साल का काम 4.5 साल में किया, 150 करोड़ का काम 460 करोड़ में लेके गए। तो मेरा भाषण इतना वायरल हुआ कि मुझे यूट्यूब से वैसे हर महीना बहुत पैसा मिलता है तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत जगह पर पहुंचा है। प्रॉब्लम यह है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। मैं अभी भी समाधानी नहीं हूं पूरी तरीके से। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो सिस्टम में है। एक चीज आपको कभी इसको आप सोच के आगे बढ़ा सके तो जरूर करिए। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इस बार पहली बार मैंने पीडी और आरओ को परफॉर्मेंस ऑडिट का सेक्रेटरी को देकर एक चार्ट दिया है कि आपने एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस का क्लियरेंस कैसे किया, लैंड एक्विजिशन कैसे की, कितना काम अवार्ड किया, कितने ब्लैक स्पॉट आपने इंप्रूव किए, आपके एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। ऐसे 25 विषय निकाले और मैंने उनको कहा कि इस 25 सब्जेक्ट के ऊपर आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा होगा वो चेक करेंगे, बाद में आपको प्रमोशन देंगे, सीआर में वो लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हम सबको आपको दे देंगे अच्छा, ऐसा नहीं होगा। समवेयर अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए और जो काम नहीं कर रहे उनको कहीं ना कहीं सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, बट इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड सैक देम। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, कंपटीशन होती है। अब हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7, और ये मैंने थोड़ी किया है। दैट क्रेडिट इज नॉट नितिन गडकरी's क्रेडिट, द क्रेडिट गोइंग टू द टीम। और मैं उनको अच्छी बात मैंने समझाई कि वो बहुत ही मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, द टोटल वर्क इज A² + B²। But when A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, उसका जवाब आता है A² + B² + twice AB, and twice AB is a result of collective team spirit. And collective team spirit में मैं अक्सर याद रखता हूँ कि human relationship is the biggest strength of politics, business and administration. My relationship with my subordinate people is equally important.
और मुझे लगता है कि हमारे लोग रात दिन काम करते हैं। तो आज इस समय क्या हुआ कि जो सक्सेस स्टोरी थी, जो रोड बहुत अच्छे तरह कम समय में हुआ, जिसको बोनस मिला, उसका प्रेजेंटेशन हुआ। और जो 5 साल से चल रहा है, किन किन लोगों ने, जो भी इन्होंने कहा ना, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी, तो वैसे ही मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट के विलन कौन कौन है, किसने रोका, निकालो उनके नाम लो। और फिर उसकी केस स्टडी हुई, और केस स्टडी होने के बाद ये पता चला कि हम ये मिस्टेक रिपीट ना करें। मिस्टेक एक बार हो सकती है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक ही मिस्टेक 10 बार करने का अधिकार नहीं है। तो धीरे धीरे वर्क कल्चर बदलता है, और लोग ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी रात दिन काम करते हैं, और कलेक्टिव टीम स्पिरिट के कारण ही जो कुछ है वो मिलता है। मंत्री करके मुझे ज्यादा क्रेडिट मिलता है। नितिन गडकरी जी, इवन दो यू हैड 49.26% इन एसएससी, आपकी अलजेब्रा तो बहुत अच्छी है। लेकिन 400 प्रोजेक्ट्स अभी भी किसी ना किसी लॉक जैम में फंसे हैं। इनको निकालने के लिए आगे क्या प्लान? देखिए, ये सच्चाई नहीं है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट होता है वो छोटे से काम के कारण भी नहीं मिलता। जैसे एक छोटे से 100 किलोमीटर के रोड पर 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता तो प्रोजेक्ट बंद रहता है। वो हम लोग क्लियरेंस के पीछे लगते हैं, जब मिलेगा तब उसको फिर करते हैं, तब तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है। कई लैंड एक्विजिशन की केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो स्टे देते हैं तो वो लटक जाता है। तो इसलिए ये 400 में से सीरियस जो है वो 30-40 प्रोजेक्ट है। पर आपको मैं बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना, ऐसे हमारे आईडीबीआई बैंक वाले, इनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट थे, तो उस समय 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। 3 लाख करोड़ का लगभग एनपीए हो गया था। और मेरे डिपार्टमेंट में, और हमने लगातार रात को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक बैठकर बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी बैठकर हम बैठते थे। एक सेक्शन ही था, और मैं आपको ये विश्वास के साथ बताता हूं कि हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को बचाया। और मैंने अभी बैंकों को भी कहा कि तुम परफॉर्मेंस गारंटी देना है, ये 1-1 साल 6-6 महीने देते नहीं। तो मैंने अभी इनका बिजनेस खराब किया। मैंने कहा हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए, और अभी हमने उसको लॉन्च किया। अब 3-4 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ की बैंक गारंटी हमारे आती रहती है, जाती रहती है। अब इंश्योरेंस बॉन्ड आ गया, इनका बिजनेस चला गया, अब तुरंत होगा। तो जितना रिफॉर्म करना है सिस्टम में, जगह जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं लेना, जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना। अभी मशीनरी जो है वो डीजल पे चलती है। अब मेरा एक प्रयास है, कठिन है वो, कि अभी मशीनरी को हाइड्रोजन पर और उसके साथ साथ एलएनजी पर और इलेक्ट्रिक पर कैसे लाए, इलेक्ट्रिक ट्रक का कैसे उपयोग हो। तो मैं सोच रहा हूं कि हम ऐसी पॉलिसी करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल को छोड़कर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेंगे, उनको हम कुछ इंटरेस्ट कम करके कुछ लोन देंगे। अभी ये जो सेग्रीगेट करना है कचरा, इसके लिए एक मशीन लगती है, जिससे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक सेग्रीगेट होता है, वो वेस्ट फिर हम लोग रोड में डालते हैं। तो मैंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, वो मशीन कचरे पे लगाएगा, और पूरे कचरे से हमारी जो हम एग्रीगेट दूर से ला रहे हैं उसमें हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करो, उससे लाने से ही हमको पुराएगा, और वो अपना काम कचरा खत्म करके डाल के बाद में मशीन बेच देगा, या जो करना है वो करेगा। तो वायबल है। धीरे धीरे ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव है कि जिससे हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा करें और कॉस्ट को भी कम करें। तो ये भी कोशिश हमारी चल रही है। नितिन गडकरी जी, काम जितना भी हो, मिनिस्ट्री जितनी भी चलानी हो, अल्टीमेटली तो जिंदगी पॉलिटिक्स पे चलती है। आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज को क्यों कन्विंस नहीं कर पाते? इस तरफ जो ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस का रिलेशनशिप है वो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप लोग सिर्फ सेंगोल को प्राथमिकता देते हैं, पार्लियामेंट में लाते हैं, lying down and all that करते हैं, लेकिन the real problems of India are price rise, bad education, unemployment. How do you respond to Mr. Rahul Gandhi? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो पॉलिटिक्स मैं करता हूँ
और मैं आपको कहूंगा कि कभी आप इस बात को मानने होता है तो इसको जरूर प्रोपोगेट करिए। पॉलिटिक्स जो है वो पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। वी नीड टू हैव नाउ न्यू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब, राजकारण का मतलब समाजकारण, राष्ट्रकारण और विकासकारण। राजनीति का मतलब लोकनीति, बृहत्तर राजनीति या धर्मनीति। मैं 80% सोशल वर्क करता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में काम करता हूं, बायोफ्यूल में काम करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार देने में सेवा करना इज ए ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे आपसे भी शिकायत है, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस से पावर पॉलिटिक्स को देते हैं। ये बहुत ज्यादा चलता है, इसने क्या क्या, उसने क्या कहा। अब लोगों में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोग नए इनोवेशंस, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, किए हुए अच्छे काम ये देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। तो ये जो कुछ चलता है, ये जो बेंच होते हैं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो वो बेंच में आदमी बैठने के बाद वैसे ही बोलता है उसका कारण अपोजिशन वाला अगर थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो आप तुरंत हेडलाइन दे देते हो, अपोजिशन वाले ठंडे पड़ गए। वो बोलता है ऐसा लिखा है क्या, और गर्म होके बोलता है फिर। अच्छा, तो ये हमारी गलती है कि राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं? देखो, अपोजिशन पार्टी में उनको ये बोलना ही है। मुझे बताइए कि 75 साल में जो कांग्रेस को इतने साल मिले, उन्होंने एजुकेशन से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब बातों का आप एक बार कंपैरिजन करिए। जो इस 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया, उसकी तुलना करें तो कई गुना हमने ज्यादा काम किया है। ये उनको भी मान्य, जब अनऑफिशियली बोलते तो अच्छा काम हुआ है करके मान्य करते हैं। पर एक बात, 100% सेटिस्फैक्शन और 100% काम हुआ ऐसा कभी नहीं होता। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिलती है उसको कार चाहिए, कार चाहिए उसको मर्सिडीज चाहिए, और मर्सिडीज है वो हवाई जहाज खरीदना चाहता है, और जो 4 हवाई जहाज खरीदता है वो भी दुखी होता है तो ये कभी ना कभी ऐसा है कि समाधान मानने पर होता है। पर एक बात जरूर है कि जो आपके इकोनॉमिक ये जो डिस्कशन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में हमारी 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52 to 54% सर्विस सेक्टर से आता है, और 12% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। हमारी 65% पॉपुलेशन रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इंडिया के साथ डिपेंड करती है। जो बात उन्होंने कही, जल, जमीन, जंगल और जानवर, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि किसान अन्नदाता नहीं, अब ऊर्जादाता बना। आपको याद होगा 2004 से मैं इथेनॉल मैंने स्टार्ट करके चिल्ला रहा था, आज वो 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गई। अब हाइड्रोजन कचरे से बनेगा, गंदे पानी से बनेगा, और किसान अब डांबर से, बायोमास से बिटुमिन बनाएगा, और बांबू को काट करके व्हाइट कोल बनेगा। रूरल एग्रीकल्चर की इकोनॉमी बदल जाएगी। जिस दिन हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22% पे नहीं लेके जाएंगे, तब तक हमारा देश दुनिया में आगे नहीं जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स और करीब 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया। अमिताभ कांत जी बैठे नीति आयोग में, जब ये थे तो नीति आयोग ने ये आइडेंटिफाई किया, और मैं ये Word by Google. Right, and let's remind you to share your thoughts and suggestions with us on social media platforms using the tag IC2023. Go ahead, tag us in your selfies and videos. We'd love to hear from you. Well, let's move on. And ladies and gentlemen, we're now going to be welcoming on stage internationally renowned Indian music composer and environmentalist, US Billboard #1 artist, GQ Hero 2020, who has won over 100 music awards across 20 countries, performed at prestigious venues in over 30 countries, which also includes the UN headquarters in New York and Geneva.
Well, absolutely. He's a UN Refugees Goodwill Ambassador, the UNCCD Land Ambassador, the UNESCO MGIP Global Ambassador for Kindness, UNICEF Celebrity Supporter, Ambassador for Earth Day Network, three-time Grammy Award winner, the iconic Ricky Cage, with his act, A Tribute to India. Namaskar everyone. Namaste everyone. Thank you to Ricky K for supporting a better, safer, more prosperous future. Ricky Kish, our champion for nature. I take this opportunity to say thank you to Ricky Cash. Ricky has been inspiring and is one of our champions. My brother Ricky, I'm really proud of you as always. Here was a man full of energy who was ready to work with these young people and happy to bring hope back to their lives. And the Grammy goes to Winds of Samsara. I'd like to thank the Recording Academy. Asatoma Satgamaya Om Shanti 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 Om. Thank you. And the Grammy goes to Stuart Copeland and Ricky Cage. In India, we've got a saying called as Vasudhaiva Kutumbakam, which literally means the world is one family. Live in peace with all entities on this planet, whether it is the animals, the wildlife, the forests. Stuart Copeland, Divine Tides, and Ricky Cage. Namaste and thank you. Climate change is absolutely real. Climate change is human-induced, and our actions are affecting countries on the other side of the world. Our first song is a dedication to Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one common future for all of us. And this song is called One Song. जागो पधारो मैं जो प्राण देवा जागो पधारो मैं जो प्राण देवा जागो जागो इंसानों के जागने का ये है समय देखना हो न जाए आने वाला जो कल होगा आज का ही वो फल होगा देना हमको दखल होगा कूचा कूचा पुकारे आओ मिलके जिसारे ना करो अनसुनारे Reach out, let us join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. Reach out, let us join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. Jago padharo मैं जो प्राण देवा जागो पधारो मैं जो प्राण देवा तू और मैं जो मिल जाए तो ना रहेगा फिर हम और वो सब करें तो जाएगा हो अब भी हम अगर चाहें तो
बदल देंगे तकदीरों को, सब करे तो जाएगा हो। दरिया दरिया पुकारे, नदियाँ करती इशारे, ना करो अनसुनारे। Join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. Reach out, let us join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. One song, one song. Reach out, let us join hands and sing this bird song. One song, one song, one song. Reach out, let us join hands and sing this bird song. One song, one song, one song. Reach out, let us join hands and sing this earth song. One song, one song, one song. Reach out, let us join hands and sing this earth song. How are you guys doing? Make a little noise if you guys are having fun, huh? Great. We can't do this alone, so you heard the song we sang. Would you like to sing with us? You can, no one is gonna judge. Guys, come on. So one song, one song, one song. Can we do that? 1, 2, 3, one song. See, I think sabko part, everyone's got the part. Now we need some energy in this. So let's do this one more time. Huh? 1, 2, 3, one song. Reach out, let us join hands and sing this earth song. You guys are lovely. One song, one song. I think everyone's passed. Together, we'll do this. Give it up for yourself, guys. You guys are lovely. IP Singh on vocals, everyone. Sudhir Yaduvanshi on vocals. Ravi Chandra Kulur on flute. You can clap for them. Come on. Anjana Padmanabhan on vocals and Giridhar Udappa on percussion. Namaskar, everyone. Namaskar, everyone. Thank you so much. So we in India, the third superpower. You can clap for that. We believe that when we speak about Vasudhaiva Kutumbakam, we are not just speaking about living in peace among all of us human beings. We're also speaking about living in absolute peace and absolute harmony with every single living being on this planet, with all life, that is the forest, the wildlife, and not just that, also living in coexistence with the elements of nature, that is the land we walk on, the air we breathe, and the water we drink. So our next song is dedicated to water. Our next song is dedicated to the great river Ganga. So the Ganga, as all of us know, is a symbol of spirituality, of love, of devotion, of life itself for all of us. In fact, very few people know that the river Ganga actually nourishes the lives of over 1/10 of the world's population. That is how amazing this river is. So through this song, follow her journey from where she takes birth in the Himalayas to where she completes a journey into the Bay of Bengal, nourishing hundreds of millions of lives along her way. Here is our next song. It's called Ganga. Tatra Tripadhaga Divya Shitatoya Ashayibhala
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी सरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी सरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि पदे मम मति रासा तव पद कमले अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामणि काधर संकटे अस्य निवासः सर्वैकुण्ठे अस्य निवासः How many of us over here fell in love with the river Ganga all over again after that song? A raise of hands. Come on. Fantastic. Thank you so much. So there's a saying in India, I'm going to say the first half and you're going to shout out the second half. Is that okay with you? Jai Jawan? Jai Kisan. Come on, you can do better than that. Jai Jawan? Jai Kisan. So praise to the soldier, praise to the farmer. This next song is a collaboration between us and the real working tribal farmers of India. These are amazing farmers who've got, they practice the purest form of agriculture. They've got all of this indigenous knowledge that has been passed down from generation to generation. But more importantly for us as musicians, they've got songs that have been passed down from generation to generation. Some of these songs are over 3,000 years old. So we've collaborated with them on one such song. And you're going to see these amazing farmers collaborate with us on the big screen behind me. Here is our collaboration with the singing tribal farmers of India. Here is Jai Kisan. Titi gari gazili ala kai kumigo tolo tolo. Na kumigo tolo murto mai folo murto de polo. Na samote kai le lo bonte bolai. Leno ni samote kai le bolo. मिट्टी में वो अपने सपने और सींच प्यार से जीना वो जीना जो कुदरत के साथ में कितना हंसी ये मौका है तो रहेगा रुको सही है जो वो करे सब एक साथ यही है मौका यही है मौका पीछे अब न देखना रात थी यहाँ पर हो रहा है अब तो सवेरा हमने तो ये सीखा कुदरत को है पता हम सबको चाहिए
हंसी ये मौका है तो रह जा चुप तो सही है जो वो करे हम खड़े हो जिंदगी के साथ सब एक साथ सब एक साथ यही है मौका यही है मौका A big round of applause for the tribal farmers of India. Come on. There's a lot that the world can learn from all of our farmers. Now, it is said that you can take an Indian out of India, but it is almost impossible to take the Indianness out of a true Indian. So this next song of ours is a tribute to our beautiful country, India. This next song is a tribute to all the Indianness in all of us. This song is called Mere Desh, Mere Gaon. आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं भूल जाए जो रास्ता थोड़ा वापस आना दौड़ा दौड़ा गलियां लेके बैठी हैं तेरी याद का जिसको तूने छोड़ा यादें भूल है सकता लेकिन खुशबू भूल न पाएगा घूम घुमा के बन के बादल लौट तू वापस आएगा चैन मिलेगा वहीं जहां तू रुक थोड़ा सा जाएगा घर आने से डर जाने को नहीं बना था तू आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं पहाड़ों से गलियों किनारों से तेरी पहले की पहचान है बादलों बहारों से रस की फुहारों से जाने का है तू अनजान है हर दिन पग चल दूर है जाता जाने कहाँ तू जाएगा डोल है धरती और इस पर जो खोजेगा वो पाएगा सांस भरेगा लंबी तो तू चैन मुफ्त में पाएगा घर आने से डर जाने को नहीं बना था तू आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं IP sing everyone.
Now, everyone, all of us, in fact, you and I'm guilty of this, that we constantly talk about changing the world, but we very rarely talk about changing ourselves. And I do this all the time too. So it's not because we are bad people or whatever, but it's simply because we have not empowered ourselves to believe that the small, tiny, incremental changes that we can make within our own lives, within our own tiny capacities actually matter. Now, the Honorable Prime Minister of India launched the Mission Life. The Mission Life, basically what it is, it's just to empower all of us to believe that we can be the change that we want to see in the world. Now, Mission Life is a global movement, as all of us know, and it's a global movement that encourages all of us to do away with the use and throw economy that all of us are so used to right now, and instead replace it with a more circular economy and reusing everything, ensuring that we buy things that are absolutely necessary. We buy stuff with a lot of mindfulness, with a lot of thought, with a lot of deliberation. Like, for example, this jacket that I'm wearing right now, I actually got it made for the Grammy Awards ceremony in February this year when I won my 3rd Grammy Award. And since February, this is the 21st concert that I've actually worn this jacket for. So if you go onto my Instagram, you'll see every second picture has got this particular jacket on there. But nevertheless, this next song of ours is dedicated to the Prime Minister's Mission Life. And the song tells us that first we have to change ourselves, and then we can change the world. And with 1.4 billion people in India, I guess we have the power to ensure that this world is a better place for everyone and everything, not just for us, but for everyone and everything all over the world. Here is our next song. It's called Rang Do. रंग दो इस जहां को एक नए रंग में, जियो जिंदगी को नई उमंग में, महकी ये हवा सुरमई सांझ की लाली, इस नई राह पर चलेगी दुनिया ये सारी। रंग दो इस जहां को एक नए रंग में, जियो जिंदगी को नई उमंग में, रंग दो इस जहां को एक नए रंग में, जियो जिंदगी को नई उमंग में। रंग दो सब दिलों को एक नए रंग में, वक्त के साथ चलो नई तरंग में, बदलेंगे हम तभी बदलेगी ये दुनिया सारी। ख्वाब देखे थे जो पूरे होंगे अब सभी। रंग दो इस जहां को एक नए रंग में, जियो जिंदगी को नई उमंग में।
Thank you so much. Now, today's India is a beautiful mix of the old and the new, the traditional, the modern. So what we decided to do is that we decided to take an old, ancient folk tune and present it in our own very respectful and modern version. I guess you're going to love this one. I hope you love this one. This is our own respectful and modern version of. Sudhir, what's the name of the song? Kya naam hai gaane ka? गाने का नाम है दमादम मस्त कलंदर। सो इस गाने के लिए जस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई गेस जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको ज्यादातर हुक लाइन्स इस गाने की आती हैं। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ गाने के लिए? 4-5 लोग तैयार हैं। मैं फिर से सेम सवाल पूछना चाहूंगा, सभी तैयार हैं मेरे साथ गाने के लिए? तो शुरू करते हैं। थैंक यू। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधणी दा सेवन दा सकी शाबाश कलंदर टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर कलंदर लाल कलंदर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधणी दा सेवन दा सकी शाबाश कलंदर टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर कलंदर लाल कलंदर हो टमाटम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर कलंदर लाल कलंदर टमाटम मस्त कलंदर हो लाल मेरी हाय लाल मेरी झनन तेरी नौबत बाजे झनन झनन तेरी नौबत बाजे याद बजे घड़ी याद बजा झूले लालन मौला याद बजे घड़ी याद बजा झूले लालन सिंधणी दा सेवन दा सकी शाबाश कलंदर टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर कलंदर लाल कलंदर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सुकड़ी दा सेवन दा सकी शाबाश कलंदर Everyone! दम लाल लाल 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 दम लाल लाल दम लाल लाल दम लाल लाल टमाटम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर कलंदर लाल कलंदर टमाटम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर कलंदर लाल कलंदर टमाटम मस्त कलंदर टमाटम 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 मस्त
कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम दमादम मस्त कलंदर अभी का पहला नंबर अली कमदम दे अंदर कलंदर लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर Sudhir Yaduvanshi on vocals. All right, just sing with me, guys. Whoa. See, I know you guys are doing really important stuff and that's serious stuff. But this, like, next 5-10 minutes, you can just relax and unwind and say, whoa. Whoa. I think we're almost like 85% there. Huh? So, one more time. Whoa. Whoa. Beautiful. This was part one of the exercise. You know the song. Now everyone has this device called a mobile phone, which has this feature called a torch. I really hope your phone has a torch, otherwise we need to do something about it. So if your phone has a torch, please show it to us, because this concert is about you and we want you guys to shine your light on us, because this song is called Shine Your Light. Come on, guys, more people can do it. Come on. Beautiful. Everybody! हम सब साथ यहाँ हैं, हम सब साथ यहाँ हैं, फर्क कहाँ है, कोई फर्क कहाँ है। चलो हाथ बढ़ाएं, चलो सबको दिखाएं, चलो हाथ बढ़ाएं, चलो सबको दिखाएं, कोई भी यहाँ अकेला ना है। It's time, let's do this, it's our time, let's do this, it's time to shine your light. Let's do this, it's time to shine your light. Whoa, 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 whoa. It is time to shine your light. मैं जो साथ निभाऊं, तू जो साथ निभाए, तो बात बन जाए, तो ये रात ढल जाए। मैं जो साथ निभाऊं, तू जो साथ निभाए, तो बात बन जाए, तो ये रात ढल जाए। चलो हाथ बढ़ाएं, चलो सबको दिखाएं,
चलो हाथ बढ़ाए, चलो सबको दिखाए, कोई भी यहाँ अकेला ना है।